Good evening, everyone, and welcome to another session of Cadets Prime, an Academy for Defense Excellence. We would like to first of all apologize the session just that we were just discussing, and there was some technical issue because of which you might not be able to hear the voice. So we are going to start again. Okay. Today we are going to discuss about the CDS2 2020 question paper for GS, and we'll be discussing the entire paper with answers and reasons. Okay, the reason that it took us some time and we couldn't come sooner with this particular session was that we wanted to be accurate. Okay, we wanted to make sure that the discussion was fruitful, it was satisfactory for those who have appeared for the examination, and for those who are wanting to appear in the coming CDS 2021 in February. It will help you regarding the way the question needs to be attempted and also the psyche of the UPSC exam. As you guys remember that while having the CDS marathon discussion and also during the general discussion about how to appear for CDS examination, I had already told you that you need to follow the psyche of the UPSC exam. That's why I had put in the civil services questions. Okay, and during the discussion, you'll see one of the question was directly asked and was directly borrowed from the civil services exam prelims this year. Okay, and going by the same trend that UPSC was following this year, be it with the CDS, be it with the NDA, the CDS examination of this year was a bit different, that you might have all realized. It was a bit tricky. Okay, and it looks as if the examiner was trying to target, okay, a very structured kind of a preparation. Okay, most of the questions that were asked, be it be any section, be it be the history, for example, okay, those were not the very traditional kind of question that you generally expect from the topics that you go through. Okay, the question asked were mostly from the topics that you might not have gone through, and you might not have even found in the books that you might have referred during your preparations. Okay, so first thing that needs to come in your mind when you are appearing for the paper and such a tricky paper comes in is that you need to realize that the paper is same for all the students. Okay, so you guys all are on the same boat. Now you need to hold on your psychology, the attitude that you have for giving the examination. That is what is going to come into play now. Also, during the discussion about the serious examination, I used to take questions from the previous year also, and some of the questions in the running year with the UPSC had asked, to give you an idea about how the pattern of asking the questions has been changing. UPSC is very infamously famous for being unpredictable, and it has again yet proved itself in the same category. Okay, and we'll be discussing all the question, and you'll realize that what might have been the intention of or the psyche of the examiner. Next thing is that while having the discussion in marathon session for CDS, I had also told you tricks and the right way to appear for questions that you might not be acquainted with. Okay, there are questions that you might not have read about. Okay, and how to appear for those questions. That particular advice of mine would have helped you a lot in this particular paper, and as the discussion goes by, you'll realize it. Okay, we have 120 questions to discuss. The entire GS paper will be discussed today. Okay, and so let's move on quickly so that we can move ahead, right? Okay, so the first question, okay, for some it might be a very easy question, for some it might be a bit tricky question. It is a bit tricky question because since the GST came into force, okay, the Indian tax structure has been seeing a overwhelming change, right? The GST initially it had a very lukewarm kind of a response, but with time it has increased exponentially. Earlier, the corporate tax used to be the major chunk of the tax resources for the government, but it has seen continuous decline. Okay, and that is why the UPSC took advantage of this turmoil period in the recent 3 4 years, where the tax
buoyancy and the share of tax from different sector has changed. And based on it, on the budget estimate of 2019, okay, the question has been asked. Let's go for the question. As per the budget estimate of 2019-2020, the following are some of the important sources of tax receipts for the union government. So four taxes have been given: the corporation tax, taxes of income other than the corporation tax, goods and services tax, and union excise duty. The first two options are part of what? Direct tax, right? These both are direct tax. And the last two are indirect taxes, right? Now they are asking based upon the share of these taxes in the revenue of the government. Okay. So which one of the following is the correct descending order of the four set tax receipt as a percentage of the GDP, right? So you need to write it in the descending order. The moment you realize that GST has taken over the rest of the tax as far as the collection is concerned, this question become one of the easiest questions in the paper, because as soon as you put option 3, that is GST, as the first and the largest share, rest of the option goes out automatically. So you don't have to be aware about what it is the corporation tax, because corporation tax and the income tax, personal income tax, they are very close to each other. Okay, one is 2.43 lakh crore, the other one is 2.65 lakh crore, and that is quite a marginal difference, right? So there might be a bit confusion in that case. So here there is no role for that confusion, and the answer would be C. That is, the highest would be GST, then the income tax, then the corporate tax, and the final one be the union excise duty. Okay. The next question. Sorry. Okay. The next question is regarding the ease of doing business ranking. Okay. You must be aware that the World Bank releases ease of doing business ranking for all the countries in the world. Okay. And it provides you an idea about how easy is it for an individual or a corporation, okay, to set up a business in a country. Okay. On the basis of 10 indicators, 10 criteria, 10 parameters, the ranking of the different countries are made, and then cumulatively the entire ranking for the ease of doing business comes into play. It became a very important parameter, a very important statistics, especially after coming on Narendra Modi as the prime minister, because in 2014, okay, he made it his agenda to bring India under the top 50 rank. And at that point of time, India was 142nd. I still remember when I heard him say that, I was like, that is very unrealistic. But it has been very impressive the way India has moved from 142nd in 2014 to 63 rank in 2019. Okay, and he missed before the general election because that was his agenda, that in the next 5 year after he coming into power for the first time, by the end of 2019, India would be under top 50 country. India is still at 63rd, but now most probably by next year, India will be under the top 50 countries for ease of doing business ranking. What they have asked is that they have given 4 out of the 10 parameters, and they are asking in which among these did India not improve but deteriorated? The ranking of India deteriorated. Okay, so here we'll take, I have compiled the entire 10 indicators. Okay, and every year what India's ranking was in those indicators, right? So out of this 10 indicators, if you see at the point number 9, that is registering property. Okay, India has moved from rank 121 in 2015 to 138 to 154 in 2018 to 166 in 2019. Okay, so as far as registering the property is concerned, the India is has been performing abysmally bad, okay, in this particular indicator, and that is one of the reason why the government is trying to bring in corporate reforms, okay, to make it easier for the corporation to be registering as a property. Also, there is another reason for this poor performance is that lot of changes are being made, okay, lot of streamlining and structural changes are being made in the law, okay, to rationalize and to make it more disciplined as far as the registration of the property is concerned. Now,
It is easier for us to answer this question if we have this table at handy. First of all, I do not expect you people to know this chart when you're going into the examination center. This is just for reference that I'm telling you that this is how the ranking have deteriorated in a particular. So we already know the answer. But now what we are going to do is, suppose we don't know that table. Now how are we going to attempt? Okay. Again, what are we going to do? We are going to use our common sense, right? Now, when it is the ease of doing business ranking, okay, so it is quite obvious that the first is the most important parameter, that is ease of starting a business. After the government coming into power, the reason why I'm saying it and relating it to the government is because from 2014 it's saying. So it was a change in government, and the policies that the government brought in, with the prime minister declaring his intention of bringing India under top 50 rank in ease of doing business, is going to have a major role. Okay, so now here is, if starting a business, the government brought in the program of Skill India program, Stand Up in India program. Now it is coming with Atmanirbhar Bharat. Okay, so Mudra loans are being provided. So the government is encouraging individual entrepreneurship. That is how the employment generation would be done. So instead of going for centralized employment, the government is focusing on empowering the people to employ other people, right? And it is a amazing thing. And this is actually the philosophy of Mahatma Gandhi. Okay, when you talk about in your polity section, when you were reading about DPSP, directive principle, you have Gandhian principle, where he encouraged the cottage and small scale industries in the village, because he wanted every section of India to be decentralizedly empowered to provide employment, so that migration did not take place. Okay, so this in definitely common sense that starting a business has become easier in India because lot of laws have been brought in by the government to encourage it. Second, getting electricity. India has invested very heavily in its infrastructure and capacity building in basic economic parameters. Okay, while electricity today, every year India is seeing exponential growth in its electricity generation capacity. Recently, India has connected all its villages to the electricity for the first time after independence. Talking about conventional and non-conventional source of energy, in both the cases, be it with the nuclear power plant, be it with the thermal power plant, be it with the solar energy, India has performed well in all the sectors. Okay, be it be India under Narendra Modi starting the International Solar Alliance with the France. Okay, where the target for solar energy generation has been increased from 20,000 megawatt, that was under the 2008 National Solar Mission, to 1 lakh megawatt in the same time period. Again, new nuclear power plants have been approved, which would be coming in place. Another thing, that the Indian thermal power plant was in major crisis at the time of the previous government ending its tenure. The reason being what? The lack of coal. India, being a country which had the seventh largest reserve of coal in the world, was not just producing it. There were two reasons for that. One, the monopoly of Coal India Limited, which recently has been removed. Now, Coal India Limited is not the only sector or only company that has the right to mine coal. Private sector and even international players are invited now. So, since your independence, Coal India Limited, a public sector enterprise, had absolute monopoly as far as coal production was concerned. Only capitative mining was allowed by the private sector. Capitative mining का मतलब क्या होता है? अगर मान लो कि मेरा एक सीमेंट प्लांट है, मेरे को सीमेंट प्लांट चलाने के लिए कोल की जरूरत है, तो मैं उतना ही कोल बना सकता हूँ जितनी मेरी खपत है. I cannot sell it in the free market. Okay, so that has been removed. So getting electricity definitely is not the indicator where India might have deteriorated. Fourth one, paying taxes. The largest tax reform in independent India coming of the GST took place under the present government. Okay, tax buoyancy has increased. Government's income in taxes. Recently, it has gone down. The reason being COVID-19. Okay, but before that, India has continuously seen increment is the revenue of the government from taxes. So again, D cannot be the option. That leaves only C, and which anyway sounded as a probable option. Okay. Now, going to the next question. Which one of the following statement with regard to the National Food Security Act is not correct? Please note one thing that you'll notice during this paper is in most of the question, not correct has been asked. And if you remember, during our session of CDS marathon, I laid stress on the point that always underline this word.
Okay, the moment it comes correct or non-correct, underline this word because it entirely changes the psychic of the examiner and the question itself. Okay, it wants you to have a more broad-based knowledge about a particular topic when they are asking which is not correct, which is correct and which is not correct. Not correct one would require your more in-depth knowledge. Here, theory of elimination is going to help you a lot. Okay, so let's see. Let's presume, okay, again we all have a limited knowledge and idea about any topic, and using that we are supposed to solve the question. Okay, so we are not going to solve it the way as if we know the answer, but we are going to solve it the way we would have done while we were appearing for the examination center at that very moment. So let's see. The act was enacted in the year 2013. This is absolutely correct. In 2013, it was the final desperate measure by the UPA government to help it in the next coming election. Okay, so it provided National Food Security Act, where most of the Indian people, around 67% of the population, would be provided subsidized food grain. Okay, there were a lot of questions asked during that time because जो एक्सपेंडिचर है सब्सिडीज का वो गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस और इकोनॉमी को बहुत नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा। ये जो इकोनॉमिस्ट थे, इट वाज अ मेजर कंसर्न ऑफ देयर। चलिए ये बात बिल्कुल ठीक है। द एक्ट वाज रोल्ड आउट इन द ईयर 2014। Now, I know that the act was enacted in 2013, but I'm not very sure that whether it was enacted, rolled out in 2013 itself, or it was um, done in 2014. And trust me, no one would remember that. Okay, so let's leave this option. We are not sure about it. It's a doubtful thing. Next, the act legally entitles 67% of the population to receive highly subsidized food grain. आप नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट कहीं पर भी पढ़ लो, कहीं पर भी पढ़ लो, ये 67% हमेशा उसमें आएगा। अगर आप नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट अगर 5 लाइन में भी पढ़ रहे हो, उसमें भी 67% आपको देख बिकॉज दैट इज वॉट मेड इट क्वाइट यूनिक। ठीक है, फूड सिक्योरिटी के बहुत सारे और भी स्कीम्स है, अंत्योदय योजना है, मिड डे स्कूल मील्स है, बाकी है जिसमें पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू हमेशा से गवर्नमेंट राशन कार्ड के थ्रू आप सब जानते हैं कि फूड आपको सब्सिडाइज फूड ग्रेन देती थी, बट दिस वाज द मेजर थिंग। ओके, फाइनल, द एक्ट इज नॉट बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन ऑल द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी। ठीक है, ये पॉइंट हमें पता है क्योंकि सभी यूनियन टेरिटरीज में और सभी स्टेट्स में इसको नहीं करा गया था। रीजन बीइंग कि स्टेट पे भी इकोनॉमिक बर्डन पड़ता है, पॉइंट वन। तो गवर्नमेंट इस तरीके से, इंडिया एक फेडरेशन है, इस तरीके से फोर्स नहीं करती है सेंट्रल गवर्नमेंट कि आपको ये फॉलो करना ही करना है। ठीक है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा, अपना जो सेंट्रल फूड का जो उसका रिजर्व होता है, सेंट्रल फूड का जो उसका स्टॉक पाइल है, उसमें से स्टेट्स को हेल्प करेगा, उसमें से स्टेट को फूड ग्रेन देगा। ठीक है, उसके लिए फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया रेस्पॉन्सिबल है, राइट। लेकिन ये इनिशियली और इनफैक्ट अभी भी आई गेस सभी स्टेट्स में नहीं है, अराउंड 33 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज हैव implemented this thing. Another thing is when you talk about union territories, all the union territories might not require food security. Many of these union territories and state might be secured as far as the food is concerned. They might have other reasons, other problems, infrastructure development. They might have capitalist problems, but food security is not necessarily their priority at that point of time. So ये भी बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है, ये भी सही है। सेकंड बी वाला सही है नहीं है नहीं पता मुझे, लेकिन क्योंकि मुझे ये पता है कि ए सी डी सही है, तो बी अपने आप करेक्ट ऑप्शन बन जाता है। दिस इज हाउ यू सपोज टू डू इट। ओके, इट्स वेरी इजी फॉर मी टू कम हियर एंड से कि हाँ एक्ट वाज इनेक्टेड इन 2013। हाँ ये भी बिल्कुल करेक्ट है, 2014 में नहीं 2013 में ही रोल आउट हो गया था ये। बट that is because I know this question and I had the time to research about it. But we need to learn with the knowledge that we have while we are sitting in the examination center. Are we able to appear for the questions or not? Right? Let's go to the next question. Which one of the following statement about the Indian economy during 2019-2020 is not correct? Are you seeing it? It will give you a confusion. Okay. Again, they are asking which is not correct. Right? There has been deceleration in the uh, growth rate. ओके, यस, इंडियन इकोनॉमी, ये अभी की प्रेजेंट गवर्नमेंट के अगेंस्ट सबसे बड़ा अपोजिशन का मेन क्रिटिकल पॉइंट क्या है कि आपने इंडियन इकोनॉमी को डिरेल कर दिया है। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी लगातार
जो कि 8 से 9% की ग्रोथ रेट पे जा चुकी थी एक टाइम पर, लगातार उसकी ग्रोथ रेट कम हो रही है। डीमोनेटाइजेशन उसका एक रीजन बना, जीएसटी भी उसका रीजन बना, जिसके फायदे होंगे, लेकिन जब आप बदलाव करते हो, ये ध्यान रखिए, घर में आप जब भी सफाई करेंगे पहले गंदगी ज्यादा मचेगी। ठीक है, तो कुछ तो अच्छे फैक्टर्स है जिनकी वजह से, और कुछ गलत पॉलिसी डिसीजन है। और इसमें इंटरनेशनल चीजें भी मैटर करती है, रूपी काफी कमजोर पड़ रहा है डॉलर के मुताबिक। ठीक है, बाहर की कंट्रीज यूरोप एंड यूएस, जो इंडिया के मेजर एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं, जहाँ पे इंडिया एक्सपोर्ट करता है, ठीक है, वहां की इकोनॉमी भी वीक है। तो इस वजह से इंडिया की इकोनॉमी की ग्रोथ कम हो रही है। देयर हैज बीन स्लगिश ग्रोथ इन टैक्स रेवेन्यू रिलेटिव टू द बजट एस्टिमेट। ठीक है, बजट एस्टिमेट से तो वैसे भी मोस्ट ऑफ द टाइम बजट एस्टिमेट थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक रहता है, एंड वी आर नॉट एबल टू अचीव द टारगेट्स दैट वी सेट। वी जस्ट ट्राइव टू डू दैट। अगर अचीव हो गया तो मतलब आपने टारगेट उतना सही रखा नहीं था। इस तरीके की आपको फिलोसफी दिखेगी। तो ये भी स्लगिश मतलब स्लो, there has been a slow growth in tax revenue relative to the budget estimate. After GST, after the reforms, after government coming up with so many schemes कि लोग वॉलेंटरली अपना टैक्स रिटर्न दे, तो गवर्नमेंट की ऑप्टिमिस्टिक थी कि ज्यादा टैक्सेस आएंगे, उस हिसाब से टैक्सेस बढ़े हैं, बट जो गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेशन है उस हिसाब से स्लगिश ग्रोथ रही है। ठीक है, फिजिकल डेफिसिट एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी हैज बीन एज पर द बजट एस्टिमेट। ये तो कभी होता ही नहीं है। ठीक है, ये होना चालू हुआ था 2010-11 के टाइम पे, जब एफआरबीएम एक्ट, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट आया था, जो कि गवर्नमेंट को कंपेल कर रहा था कि फिजिकल डेफिसिट को अचीव करना है आपको, 3% को। ठीक है, तो गवर्नमेंट उसके आसपास आने लग गई थी। लेकिन रिसेंटली बिकॉज ग्रोथ रेट नीचे जा रही है, तो गवर्नमेंट बोरोइंग और एक्सपेंडिचर दोनों, इन्वेस्टमेंट दोनों काफी बढ़ा रहा है। ठीक है, तो उसकी वजह से फिजिकल डेफिसिट बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है। द टारगेट इज 3% एंड वी आर स्टिल एट 4.4-4.5% ओके ऑफ द जीडीपी। इसका इम्पैक्ट ये पड़ गया है कि गवर्नमेंट रिसेंटली इज कमिंग अप विद प्रोविजन कि ये एफआरबीएम एक्ट हटाओ, क्योंकि ये गवर्नमेंट का कहना है कि एफआरबीएम एक्ट इज क्वाइट unreasonable in current scenario and it does not give the space for to the government to go for welfare and economic growth measures। ठीक है, तो ये डेफिनेटली गलत है, लेकिन तब भी हम फोर्थ ऑप्शन पढ़ेंगे, क्योंकि दैट इज व्हाट आई हैव टोल्ड यू, दैट नेवर लीव द क्वेश्चन any option of it unread। The non-tax revenue registered a considerably higher growth. Yes, okay. The non-tax revenue registered because of, as I said, the government has been encouraging tax compliance, so it has seen a higher growth rate. Okay, the answer is we also have India's fiscal deficit widened to 4.5, as I said, 2 of GDP for the previous fiscal, overshooting the government's revised estimate of 3.8। रिवाइज एस्टिमेट मतलब एफआरबीएम आपको कहता है दैट द फिजिकल डेफिसिट नीड टू बी 3%, एंड द गवर्नमेंट बेस्ड अपॉन द करंट सिनेरियो revised it ki that will not be able to achieve 3% but will try to achieve 3.8%, and the government wasn't able to achieve that also, and it overshot to 4.5 percentage, right? Next, as per the budget estimate of expenditure on major subsidies during 2019-20, the maximum expenditure was likely to be on, जो हमने अभी नॉर्मली बात करी थी, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट और बाकी चीजों की, इट विल हेल्प यू इन दिस केस। ओके, यूरिया सब्सिडी, ठीक है, पेट्रोल सब्सिडी, फर्टिलाइजर सब्सिडी, ये तीनों वो सब्सिडीज हैं जहां पे लगातार गवर्नमेंट कोशिश कर रही है सब्सिडी से पीछा छुड़ाने का। इट्स नॉट एनकरेजिंग, इट्स डिस्करेजिंग इट। द रीजन बीइंग, एक तो ये बहुत पॉलिटिकल इशू बन गया है, सेकंड यूरिया सब्सिडी ने इंडिया की सॉइल फर्टिलिटी को बहुत ज्यादा हार्म किया है। तो आपकी ज्योग्राफी, हर जगह आपकी कंप्लीट नॉलेज विल हेल्प यू to solve any of the question with the limited knowledge that you have. Be jack of all trade, master of none, it's fine, but use the knowledge that you have everywhere. Don't restrict yourself कि इकोनॉमी का क्वेश्चन है तो यूरिया और सब्सिडी मैं टेक्निकली समझूंगा, नहीं। आप लेकर आइए, आप सॉइल हेल्थ का देखा था आपने, सॉइल हेल्थ खराब हो रहा है बिकॉज ओवर यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड यूरिया। सब्सिडी की वजह से फार्मर्स, एक तो बराबर की सब्सिडी नहीं थी, एनपी के फर्टिलाइजर्स आपके थे, अलग अलग सब्सिडी रेट मिलती थी, उसके वजह से अलग अलग रेशियो, इनका एक प्रोपोर्शन होता है जिसमें लगाना होता है। ठीक है, उस प्रोपोर्शन में फार्मर्स नहीं लगा रहे थे, एंड बिकॉज ऑफ ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ इट, आपकी सॉइल में एल्किलिटी कहीं पे बढ़ गई है, कहीं पर आपकी आपका एसिडिटी बढ़ गई है, कहीं पे आपको पंजाब में जिप्सम लगाना पड़ रहा है क्योंकि सॉइल में सॉल्ट आ गया है। ओके, दो आर द रीजन। पेट्रोलियम से तो हटा दिए, डीजल से भी हटा दिए, इसलिए रेट्स बढ़ गए थे। ठीक है, तो फूड ऐसा सेक्टर है जिसमें गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट कर रही है बिकॉज इट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट, और फूड के बेसिस पे ही पॉवर्टी को मेजर करा जाता है इंटरनेशनली। ठीक है, तो इंडिया का
अगर फूड सिक्योरिटी हो जाएगा तो इंडिया का जो ह्यूमन रिसोर्स है, क्योंकि हमारा जो डायस्पोरा है, जो हमारी डेमोग्राफी है, इंडिया इज वन ऑफ द यंगेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड, एंड टू गेट द बेनिफिट आउट ऑफ अवर यंग पॉपुलेशन, okay, we need to provide them with proper food and nutrition. So again, due to National Food Security Act, 67% of the food grain, 67% of the population, that is around 80-85 crore people, are being given subsidized food grains. Midday meal is there, Antyodhya Yojana is there, and because of that, government is investing maximum in food subsidy. So that is would be the correct answer. Now, which one of the following Indian places receives minimum rainfall in a year? Okay, Jodhpur, Leh, New Delhi, Bangalore. Right? First of all, I'll immediately remove New Delhi, and I'll also remove Bangalore. New Delhi receives enough rainfall as compared to, we are not as bad as the Rajasthan desert or the Himalayan regions are concerned. Okay. अब उसको बाद में पहले डिस्कस करेंगे, पहले उनको हटाओ जो कि नहीं है. ठीक है. बेंगलुरु में बारिश काफी होती है. ठीक है. वहां पे वेदर भी वैसा है, बारिश होती है, ऑनसेटिंग मानसून भी देता है, रिट्रीटिंग मानसून भी बारिश करता है बेंगलुरु में. ठीक है. तो न्यू दिल्ली और बेंगलुरु तो यहाँ पे नहीं है, क्योंकि हम मिनिमम रेनफॉल की बात कर रहे हैं. लेह और जोधपुर, कुछ लोगों ने तुरंत अपना दिमाग कॉमन सेंस की यूज करके, लेकिन ज्यादा यूज ना करके, जोधपुर मार्क कर दिया होगा कि रेगिस्तान, रेगिस्तान से कम बारिश कहाँ होती है. ठीक है. उन्होंने लेह को कंसिडर ही नहीं किया होगा. ले को कोल्ड डेजर्ट बोला जाता है, बट देयर इज अ रीजन उसको डेजर्ट बोला जाता है. आप प्लीज ध्यान रखिए बारिश कैसे होती है. ठीक है. दो तीन रीजन है. एक, आपकी बारिश होगी इक्वेटोरियल रीजन में होगी, उसको कन्वेंशनल रेनफॉल बोलते हैं. कन्वेंशनल रेनफॉल का मतलब क्या है? इवेपोरेशन होगा दिन के टाइम पर. ठीक है. भारी इवेपोरेशन होगा क्योंकि सनलाइट डायरेक्ट है, ये 0 डिग्री है. ठीक है. और शाम तक में वो बादल ठंडे हो जाएंगे और वो आपके बारिश कर देंगे इक्वेटर वाले रीजन में. आपके इक्वेटर से ट्रॉपिकल रीजन के बीच में इस तरीका आपको मिल जाएगा. मेनली इक्वेटोरियल रीजन में काफी हैवी रेनफॉल होती है. दूसरा क्या होता है? इंडिया का मानसून. क्या हुआ? इंडिया इस तरफ है. ठीक है. मानसून विंड्स जो हैं वो यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है तिब्बत के पास में, तो मानसून विंड्स बेंड होती हैं, इंडिया की तरफ आती हैं और इंडिया पे बारिश करती हैं. वेस्टर्न घाट रीजन में बहुत बारिश होती है, हैवीएस्ट रेनफॉल रीजन. वाई? क्योंकि बारिश होने के लिए बीच में पहाड़ होना चाहिए. अगर हिमालय नहीं होता तो इंडिया पूरा का पूरा ही हो सकता है डेजर्ट फॉर्म में रहता, कि सारा का सारा मानसून वीड पार करके, हिमालय को पार करके तिब्बत साइड में चला गया. दिस इज व्हाई हिमालय इज अ ब्लेसिंग फॉर इंडिया. दिस इज व्हाई द एंशिएंट सिविलाइजेशन वाज हियर, बिकॉज ऑफ रेनफॉल, सॉइल, फर्टिलिटी, हर चीज हिमालय से है. ठीक है. यहाँ पे आपका हिमालयन रेंज आ गया. तो क्या होता है जब आपके रास्ते में पहाड़ आता है, तो क्या होता है? जो हवा है ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है, और जैसे ऊपर चढ़ती है ठंडी हो जाती है, और इस साइड पे वो बारिश कर देती है, जिसको हम बोलते हैं लीवर्ड साइड, और ये अपोजिट साइड हो जाता है. ठीक है. ये शैडो रीजन है, फिर यहाँ पे बारिश नहीं होती है. जो लेह आपका रीजन है वो आपका विंडवर्ड साइड पे आ जाता है, उल्टे तरफ. तो उससे पहले ही बारिश, जो पानी थोड़ा बहुत बादल के पास होता है, वो कर देती है. एक और एक चीज ध्यान रखिएगा, बहुत ऊंचे पहाड़ों पे भी बारिश नहीं होती है. रीजन बीइंग, उतना ऊपर तक हवा चढ़ नहीं पाती, उससे पहले ही बादल फॉर्मेशन हो जाता है और उससे पहले ही रेनफॉल भी हो जाती है. इन बोथ द केसेस रेनफॉल इज लेस, लेकिन जोधपुर रीजन में तब भी अराउंड 30 to 50 mm की एनुअल रेनफॉल होती है, वेरएज लेह में सिर्फ 10 सेंटीमीटर की रेनफॉल होती है. सो द करेक्ट आंसर वुड बी लेह. ओके. नाउ नेक्स्ट, टिम्बर वेजिटेशन इज जनरली नॉट फाउंड. इस बार तो यूपीएससी ने नॉट वर्ड को इतना यूज किया है. ठीक है. और कई जगहों पे तो आप में से कई लोग होंगे जिन्हें कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्वेश्चन में नॉट वर्ड भूल गए. ठीक है. और कई बार जब आप नॉट वर्ड भूल भी जाते हैं, तो आप जब लिमिटेड दिमाग लगाएंगे तो वो उसमें भी आपके ऑप्शंस आपको ठीक लगने लगते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इधर पे नॉट वर्ड हटा दूंगा तो मेरे को सबसे सही लगेगा सब ट्रॉपिकल रीजन टिम्बर के लिए. ओनली जब मैं नॉट वर्ड को ऐड करूंगा तब मुझे पता पड़ेगा कि अच्छा इसमें से एक ही ऐसी जगह है जहां पे ये नहीं हो सकता है, बिकॉज अगेन आई विल बी यूजिंग माई लिमिटेड नॉलेज. ओके. सो इसलिए आई सेड कि जब भी ऐसा वर्ड आए तुरंत उसको सर्कल कर लीजिए ताकि कंफ्यूजन ना हो. ठीक है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट. टिम्बर वेजिटेशन. ओके. हाउ आई रिमेंबर टिम्बर वेजिटेशन? आई एम
do not just remember it through geography. Generally, your knowledge should be relative to something. I remember when the British attacked Myanmar, okay, and tried to capture it. The reason was their rich timber vegetation, ठीक है, जिसको वो यूज करना चाहते थे। भूटान भी उसके लिए जाना जाता है। तो जब म्यांमार की बात हुई, ठीक है, देन नीचे वाला रीजन आ गया, पहाड़ी हिमालयन रीजन तो है नहीं। जब हम भूटान की बात कर रहे हैं तो पहाड़ी रीजन भी आ रहा है। तो इसी छोटी सी चीज को हम यूज करते हुए सॉल्व करेंगे। सब ट्रॉपिकल में बिल्कुल होगा, ठीक है। टेम्परेट में अगर भूटान वाले ठंडे एरिया में हो रहा है तो ठंडा थोड़ा इसका चल जाएगा, राइट। एल्पाइन रीजन क्या होता है? एल्पाइन रीजन होता है, पहले आपका टेम्परेट आता है जहाँ पे ठंड होती है, उसके ऊपर आता है एल्पाइन, और उसके ऊपर आता है तुंद्रा जहाँ पे एक्सट्रीम ठंड होती है, ठीक है। अल्पाइन जनरली बोला जाता है पहाड़ी इलाकों में, ठीक है। हिमालय पे जो आपके ट्रीज वेजिटेशन होते हैं उसको अल्पाइन रीजन आप बोलेंगे। इट इज बेस्ड अपॉन हाइट, so 3000 to 5000 meters alpine region would be there. Above that, tundra vegetation would be there. Okay, tundra region is there, the region, and the tundra vegetation is there with of the vegetation. Tundra vegetation is like Siberia. Okay, you don't have timber vegetation over there. It's very cold. ओके, तो वहां पे नहीं हो पाता है। तो ये तीनों तब भी रिलेटिव है, ये एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशन है। तो इसी चीज को यूज करते हुए योर आंसर वुड बी डी। ओके, टिम्बर वेजिटेशन विल नॉट बी फाउंड इन टुंड्रा रीजन, राइट। नेक्स्ट, decadal growth rate of population in percentage was highest in India in the year. Okay, again, if you are aware, because there are many sources where all the consensus of India, the census of India, which happens every 10 years, uh, since I guess 1872. Since then, we have been having this census in India. So you get the basic comparison and important points of those. If you've read that, you'll be able to answer it quite easily. If not, then what? How I'm going to achieve? How I am going to solve this paper? इंडिया जब आजाद था, जब गरीबी थी, जब अनएजुकेटेड लोग ज्यादा थे, तब ग्रोथ रेट का डायरेक्ट उससे रिलेशन था। लेकिन प्रॉब्लम क्या था, उस टाइम पे इंडिया के पास हेल्थ सेक्टर भी नहीं था, तो डेथ रेट भी ज्यादा थी, ठीक है। तो बर्थ रेट एंड डेथ रेट के बीच का आपका जो नंबर आता है, दैट इज व्हाट योर पॉपुलेशन ग्रोथ इज। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल कंसिडर 1961। Okay, but here the condition of Indian economy, India was just free from a colonial rule, and that is why I would not have considered this. The thing that would have caught my eye is 1971 इस टाइम पर, ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड पॉपुलेशन कंट्रोल एक बहुत मेजर पॉलिटिकल इशू बना था। इसके लिए संजय गांधी बहुत जाना जाता था, ठीक है। फोर्स्ड स्टेरिलाइजेशन का चार्ज लगा था उनके ऊपर पे। तो इसका मतलब क्या है? पॉपुलेशन आबादी एक्सप्लोड, द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बिकम अ मेजर मेजर प्रॉब्लम फॉर इंडिया ड्यूरिंग दिस डिकेड, एंड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी 1975 गवर्नमेंट स्टार्टेड टेकिंग ड्रास्टिक स्टेप टू डिक्रीज द ग्रोथ रेट। ओके, उसके बाद तो इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोथ परसेंटेज, पॉपुलेशन बढ़ रही है लेकिन किस तेजी से बढ़ रही है, वो डिक्लाइन होना चालू हो गई है, ठीक है। 2026 तक आपकी सारी लोकसभा और विधानसभा क्षेत्र, ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंसी की जो सीट्स हैं वो फ्रीज कर दी गई हैं। क्यों? 2026 में इंडिया की पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो जाएगी, ठीक है, ग्रोथ रेट स्टेबलाइज हो जाएगा। तो हम अब जो कर्व है उसको फ्लैट कर रहे हैं। तो उस बेसिस पे योर सी वुड बी द answer for the decadal growth rate. Okay. Next, the isotherm line which divides India north-south in almost two equal part in the month of January is. Okay, isotherm line क्या होती है? ठीक है, isotherm line जैसे आइसोबार होता है, आइसोबार क्या होता है? बेस्ड अपॉन द प्रेशर एरिया जो ग्लोब है उसको डिवाइड करता है। इमेजिनरी लाइंस होती है। वैसे आइसोथर्म लाइन क्या है? वो उन लाइन उस डॉट्स को ज्वाइन करता जाएगा जहां पे टेम्परेचर सेम है, ठीक है। अगर इधर पे सभी जगहों पे 10 डिग्री सेंटीग्रेड है तो ये आइसोथर्म लाइन इस तरीके से हो जाएगी, ठीक है। तो ये पूछ रहा है ऐसी कौन सी आइसोथर्म लाइन है, ये लाइन को क्या बोलेंगे? 10 डिग्री सेंटीग्रेड आइसोथर्म लाइन, ठीक है। तो वैसे ही दे आर आस्किंग दैट विच अमंग द फॉलोइंग टेम्परेचर आइसोथर्म लाइन विल डिवाइड इंडिया इनटू नॉर्थ एंड साउथ इन टू इक्वल पार्ट्स इन द मंथ ऑफ जनवरी। तो पहली चीज क्या है? ठंड का मौसम है, जनवरी है। सेकंड, इंडिया को नॉर्थ एंड साउथ में जब आप डिवाइड करते हैं तो नॉर्थ इंडिया कॉन्टिनेंटल है, मतलब अंदर की तरफ है। साउथ इंडिया कोस्टल है, कोस्ट पे टेम्परेचर ना ज्यादा कम होता है ना बहुत ज्यादा हाई रहता है, ठीक है। तो इनमें
I'll remove these two because these are too cold for being the line for the peninsular India. Okay. Now these two are the option. But when you talk about the average temperature, which is around 22 degrees centigrade, so I would have picked, I would have been confused between P and D. But the isotherm line in the middle of India, passing through the Western Ghat region to the Maharashtra to Madhya Pradesh region, Satpura ranges के नीचे, that divides India into two part, which is a 20-degree centigrade line. Okay, so here also you could have been able to solve this question based upon the knowledge that you have about the different uh, points. Okay, now this one is a very direct question. You know the Köppen climate codes. ओके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, अगर एनसीईआरटी आपने पढ़ी है बहुत आसानी से हो जाएगा. चलो मान लो तब भी सर मेरे को याद ही नहीं आया, इतने सारे कोड थे, वो एक ही टेबल थी, यू रिमेम्बर, नीचे की तरफ फर्स्ट पेज पे. ओके, तो ट्रॉपिकल सवाना क्लाइमेट, जिसको आपका ट्रॉपिकल है, ये वर्ड ध्यान रखिए, ट्रॉपिकल है, सवाना है, ग्रासलैंड वाला स्ट्रक्चर है इसका क्लाइमेट, उसकी बात कर रहा है. मुझे ये बात पता है, जो कैपिटल सी होता है ये कोस्टल के लिए मैंने ध्यान रखा था, और जो कैपिटल डी होता है वो एकदम कॉन्टिनेंटल होता है, इंटीरियर. ठीक है, ए एम इज द मॉनसून वन. This is how I remembered India for. Okay, so AW is what is left, which is also India is also tropical. Tropical savanna पूछ रहा है तो A हो जाएगा. और ये winter के basis पे आपका rainfall in which month, according to that it has been mentioned. So the option is A, that is AW would represent in the Köppen code for savanna, right? Now the largest geographical area of India is covered by which among the following types of soil? Okay, इसमें आप ज्यादा टेक्निक यूज नहीं कर सकते. वर्टिसोल, उल्टीसोल, इंसेप्टिसोल्स, बस ये सारे सॉइल के टेक्निकल नेम्स हैं. ठीक है, दूसरे नाम हैं. और उसके बेसिस में ये पूछ रहा है कि लार्जेस्ट ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया इज कवर्ड बाय विच. ये सिंपल, अगर इतनी सी बात है कि अगर आपको एंटीसोल, एल्फिसोल्स के मतलब पता है तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे. एल्फिसोल एक्चुअल में एक बहुत ब्रॉडर टर्म है, जिसको बोला जाता है जो भी इक्वेटोरियल और ट्रॉपिकल रीजन में सॉइल फॉर्मेशन होता है उसको जनरली एल्फिसोल टर्म से बोला जाता है. तो इट इज अ वेरी ब्रॉडर टर्म, एंड बिकॉज इंडिया लाइज इन दैट बेल्ट, सो answer C would be the correct answer for this particular question, right? Now, next, which one among the following cities is closest to the equator? Here mapping के ऊपर बहुत क्वेश्चंस आए ज्योग्राफी में, so you should have read and understood the map very clearly. Specifically the countries on Tropic of Cancer, Tropic of Capricorn and equator, you should have gone through it. If you would have gone through it, you would have very easily known that Singapore is located very close to equator. You did not even have to know about the rest of the option. Okay, by just knowing about the Singapore, you would have known that Singapore is the closest. Okay, so answer B is the right option for this question. Now, who among the following gave evidence before the Joint Select Committee um, on the Government of India Bill 1919 in favor of female franchise? Okay, फीमेल फ्रेंचाइज का मतलब क्या है? उस टाइम पे औरतों को हक नहीं था वोट करने का. ओके, so at that point of time India was struggling. India wanted to have female franchise. In fact, many developed countries also did not give complete right to the women to vote. Okay, India was one of the miracle country that in 1947, the moment we got independent, being one of the poorest countries in the world, with with lot of problems of poverty, of migration, of India being broken into um, pieces, new country being generated out of it. But 1947 itself, when democracy was considered to be the government for the elites, the government for the corporates, the government for the capitalists, okay, India gave all its citizens, okay, the right to vote. That is the adult franchise, based upon not on sex, not on gender, based upon what? Your age. That is why adult franchise was provided by India. Now, when India did that, actually the world Western country laughed at us. Indian democracy is the biggest experiment successfully conducted by the humankind, period. Okay.
No other country. You take example of Pakistan, you take example of Bangladesh, you take example of Myanmar, take any example of a country that was similarly positioned as India was. They have failed. They could not sustain democracy. हर जगह मिलिट्री रूल आया है, लेकिन इंडिया में नहीं आया है. आंसर क्या है? India's diversity. India is so diverse that all the Indians are pushing India from their side, and that is why India is stable. So it is not easy to have an autocratic rule in India. Okay, so in 1919, when this the bill was after the reform bill, the question of female franchise came into question. At that point of time, after 1916, आपको पता है होम रूल मूवमेंट और सब, एनी बिसेंट वाज दी सेंटर स्टेज. हर जगह थी एनी बिसेंट. ठीक है, सरोजनी नायडू भी थी, गांधी की फॉलोवर थी, शी वाज आल्सो वेरी प्रोएक्टिव. यहाँ पे आपको क्वेश्चन आएगा हीरा भाई टाटा. ठीक है, तो ये डाउटफुल होगा. अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि डी ऑप्शन तीनों का दे रहा है, राइट. सो हीरा भाई टाटा एक्चुअली वाज आल्सो, ये क्वेश्चन ट्रिकी है. ट्रिकी इसलिए है क्योंकि एक्चुअल में ये तीनों लड़कियां, ये तीनों औरतें मेंबर थी ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी की. तो आंसर ये हो जाएगा डी. ठीक है, नाउ रीड द क्वेश्चन अगेन एंड यू विल अंडरस्टैंड यूपीएससी कैसे आपसे खेल जाता है. Even though you are well prepared, even though you knew everything, and still you might have a heartbreak because what? Who among the following gave evidence before? उसने ये नहीं पूछा कौन मेंबर था, वो ये पूछ रहा है who gave evidence before. That means who was proactively involved in the committee. हीरा भाई टाटा had moved out of the committee और उनके जगह पे सरोजनी नायडू आई थी. So option 3 will not be the option. The option would be 1 and 2, right? Okay. Now, next one. In which one of the following places was the Ahmadiyya movement started by Mirza Ghulam Ahmad? Okay. Patna, Aligarh, Bhopal, Gurdaspur. If you are aware about this man, then you would know that he was from Punjab. Okay, and where the Ahmadiyya movement was taking place. Okay, this has become a major point. The Ahmadiyya society as a community has become a major problem in Pakistan, and they don't have the rights, they don't have citizenship also at this point of time. Okay, and that is why during the CAA protest taking place, their concerns were also raised that there are also minorities in the Muslim itself who are being prosecuted over there, and the government needs to take care of them also. Okay, that is another topic, another discussion, a political one in fact. But here we want to discuss about, either you are aware about Ahmadiyya movement or either you are aware about Mirza Ghulam Ahmad. Okay, he was from Gurdaspur in Punjab. So the answer would be, there are some of the questions where you just need to know what it is, right? For example, the questions on current affairs, places, facts, and so on, where we have the margin to analyze, to be analytical. There we are going to do that. Okay, this is not which, it's with whom did Subhash Chandra Bose form an alliance to destroy the Holwell monument in Calcutta during the 1939-1940? Okay, this is something that you do not read usually when you're reading the history book, right? So either you would have left this question directly, और कुछ लोगों ने बैठ के दिमाग लगाया होगा. उनको नहीं पता भैया सुभाष चंद्र बोस ने ऐसा कुछ किया था क्या. लेकिन हॉलवेल मॉन्यूमेंट क्या है, ये आपने हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा है. ठीक है, याद करिए, सिराजुद्दौला ने 1756 पे जब अटैक किया था ब्रिटिश के ऊपर, ठीक है, तो वहां पे ब्रिटिशर्स को कैप्चर करके एक कमरे में डाल दिया था, बहुत छोटे से, जिसको ब्लैक होल कॉन्स्पिरेसी बोला जाता है. उसमें से मैक्सिमम लोग मर गए थे. ठीक है, तो उसी के बेसिस में एक बंदा जो बचा था, हॉलवेल वाज द पर्सन हु वाज अलाइव, एंड उसी के ऊपर मॉन्यूमेंट बनाया गया था. ठीक है, अब ये देखना है, चलो ये बात पता चल गई इस क्वेश्चन से कि सुभाष चंद्र बोस ने किसी के साथ पार्टनरशिप करी थी कि इसको डिस्ट्रॉय करना है. 1939 1940, ये क्यों इंपॉर्टेंट है ये ईयर? क्योंकि 1939 में ही सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, एंड ही रिजाइंड बिकॉज ऑफ द डिफरेंसेस दैट ही हैड विद द other members of the Congress. Okay, also the world war was starting and Subhash Chandra Bose had a very different idea about India's involvement in the war. Okay, तो यहाँ पर ये ध्यान रखना, मुस्लिम लीग जो है वो बंगाल में ही स्ट्रांग थी. ठीक है, एक मैं आपको बहुत आयरनिक फैक्ट बताता हूं कि बांग्लादेश को पाकिस्तान से 71 में इंडिया ने अलग करा, आफ्टर पाकिस्तान आर्मी ने जेनोसाइड करा बंगाली लोगों का.
based upon their language and based upon the skin color and their eating habits and rest of the things. देखो सीधी बात ये है कि अगर आप बंटवारे के दिमाग से आप देश बनाओगे तो आपको कितना भी छोटा देश दे देंगे, आप उसमें भी कोई ना कोई बहाना ढूंढ लोगे भेदभाव करने का. ओके, दैट इज व्हाई दैट कंट्री इज नॉट स्टेबल. अभी वो अपने सेक्शंस को लेकर दूसरी माइनॉरिटीज को लेकर अभी डिवाइडेड है. हाँ, तो दैट इज व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ हैविंग अ डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया. नाउ ये ध्यान रखना कि पाकिस्तान से निकल के बांग्लादेश बना. पाकिस्तान ने बांग्लादेश को सेकंड क्लास ट्रीटमेंट दी, लेकिन एक्चुअल में पाकिस्तान की क्रिएशन के लिए बांग्लादेश ज्यादा रिस्पॉन्सिबल था. इट वॉज फ्रॉम नवाब ऑफ बंगाल हु हेल्प क्रिएट मुस्लिम लीग. पूरा क्रेडल मोमेंट का बंगाल में था. ठीक है, उनके एफर्ट से दे गॉट पाकिस्तान. And when they got Pakistan, they started the people who actually helped them create their own country as a second class citizen. Okay, that is the irony, okay, of the fact. So मुस्लिम लीग वहां पर बहुत एक्टिव थी. तो सुभाष चंद्र बोस ने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर to there he had a plan to destroy the Holwell monument in Calcutta, right? Now next question, who among the following created the first all India trade union congress? It's a very easy question, सभी बुक्स में है, एनसीईआरटीज में है. ठीक है, इसमें कहीं डाउट नहीं होना चाहिए. एनएम जोशी इज द वन हु इज क्रेडिटेड विद इट. ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इट वाज नॉट द फर्स्ट ट्रेड यूनियन, इट वाज अ स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, उसके बाद सीपीआई जैसे एम एन रॉय है 1925, 1920 में ही उन्होंने बना ली थी कम्युनिस्ट पार्टी आपकी ताशकंद में, बट उस टाइम पे बहुत हंट किया जाता था, तो ही declared it or accepted it in 1925. So the option for this question is C. Now, which one among the following was India's first trade union in the proper sense of term? जैसा मैंने कहा पिछले क्वेश्चन में, that was a specific all India trade union congress. This one is first trade union in proper sense. ठीक है, मतलब सिर्फ नाम का नहीं है. ठीक है, लिटरली वो ट्रेड यूनियन की तरह काम भी कर रहा है. ठीक है, बॉम्बे लेबर यूनियन भी पहले काफी बन चुका था. अहमदाबाद लेबर यूनियन गांधी के अंडर में बना था. ठीक है, और काफी पहले इवन 19th सेंचुरी, बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी ट्रेड यूनियन का कॉन्सेप्ट इंडिया में आने लगा था, लेकिन दे वर नॉट वर्किंग इन अ प्रॉपर सेंस. व्हेन यू टॉक अबाउट प्रॉपर सेंस, द मद्रास लेबर यूनियन वाज द फर्स्ट proper labor union that was started by BP Vadia, okay, in 1918, right? So C would be your correct answer for this question. Now, next one. Who among the following formed the Seva Samiti Boy Scouts Association in 1914? Again, not a very traditional kind of a question, not a traditional kind of a topic that you might have gone through. Okay, only if you had a habit of eventual reading, then only you might have been aware about this thing. Boy Scouts was a major trend during that time by the end of 19th century itself. Okay, यूरोप और बाकी जगह पे, लेकिन वो उनके इंटेंशन और उनके रीजंस काफी गलत थे. ठीक है, ये एक रेसिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे यूज करा जाता था, वाइट सुप्रीमेसी को प्रमोट करता था. और उसी टाइम पे इंडिया में भी ये डिसाइड किया गया है, क्योंकि इंडियंस को अलाउड नहीं था बॉय स्काउट्स ज्वाइन करना. ओके, इट वाज ओनली प्रिविलेज फॉर द ब्रिटिशर्स. सो इंडियंस आल्सो डिसाइडेड दैट वी नीड टू हैव आवर ओन. ओके, सो द फर्स्ट सेवा समिति बॉय स्काउट्स एसोसिएशन वाज स्टार्टेड इन 1940 बाय श्री राम बाजपेयी. ओके, इन इलाहाबाद. इट वाज स्टार्टेड इन इलाहाबाद. Again, it's a factual based question. Next, which one among the following is not correct about the Secretary General of the Lok Sabha? Okay. Again, we are aware about Lok Sabha. We are aware about the election. We are aware about the members. We are aware about the speaker, the power of deputy speaker, everything. Secretary General is the topic which we might not have come across. Some might have read it. Okay. Some might not have read it. So, पहली चीज वो जो मैंने एकदम क्लियर करी थी कि कोई भी क्वेश्चन आपने पढ़ा हुआ हो ना पढ़ा हुआ हो, आप छोड़ेंगे नहीं. हर क्वेश्चन को लेकर हमें लड़ना है. ओके, ही इज द लीडर ऑफ द एंटायर लोक सभा, नॉट इन द ट्रेडिशनल काइंड ऑफ अ वे. मींस ही इज द हेड, ही सिट्स ऑन इन द फ्रंट, ही इज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द असेंबली. ओके, तो द पहला, द सेक्रेटरी जनरल इज एडवाइजर टू द स्पीकर. यस, दिस इज व्हाट हिज मेन जॉब इज, that he advises speaker. Speaker is a very important position and he needs an advisor to work with day-to-day activities. Second,
The Secretary General acts under the under this is under the authority in the name of the Speaker. ओके, ठीक है, बिल्कुल स्पीकर के अंडर में, उन स्पीकर के अंडर में अथॉरिटी में सेक्रेटरी जनरल काम करता है। फर्स्ट और सेकंड पॉइंट तो सिमिलर हो गए। थर्ड, द सेक्रेटरी जनरल वर्क्स अंडर द स्पीकर विद डेलीगेट अथॉरिटी। ठीक है, बिल्कुल ठीक। डेलीगेट अथॉरिटी का मतलब क्या है? स्पीकर के पास बहुत सारे काम हैं, ठीक है, उसके पास बहुत सारा वर्कलोड है, ही हैज हिज ओन इम्पोर्टेंस ऑल्सो, तो वो अपना कुछ काम सेक्रेटरी जनरल को डेलीगेट या दे देता है, दैट यू हैंडल दिस वर्क ओके ऑन माय बिहाफ, बट ही कैन नॉट पास ऑर्डर्स इन द नेम ऑफ स्पीकर। तो काम करेगा लेकिन वो स्पीकर की पावर्स को रिप्रेजेंट करना चालू नहीं कर देगा। दैट इज वाई द ऑप्शन डी इज नॉट करेक्ट। अगेन इन्होंने नॉट वर्ड यूज किया है। द सेक्रेटरी जनरल passes order in the name of the speaker. No, he cannot do that. He cannot presume that power. Okay, next, who among the following moved the motion of secret sitting session of the assembly 1942? ठीक है, again this is something that you might not have come across in the traditional sense of way in normal books that you read for modern history. 1942 was a very historic year because of quit India movement, right? क्विट इंडिया हुआ था इस टाइम पे, इसी के वजह से, ठीक है, एक सीक्रेट सिटिंग सेशन किया गया था। और किसके कहने पे किया गया था? ठीक है, जीवी मावलंकर, जिनका अपना खुद का इंपॉर्टेंस है इंडिपेंडेंट इंडिया में। ठीक है, ही वाज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली व्हाइल इट वाज वर्किंग एज अ लेजिस्लेटिव असेंबली। ओके, तो जीवी मावलंकर had moved the motion of secret sitting session of the assembly in 1944 to endorse the quit India movement. Right, next, which of the following articles, very easy question, मैंने आपसे क्या कहा था पॉलिटी के सेशन में? पॉलिटी का आपको एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करना है, ठीक है। सो which of the following articles in the constitution of India are exceptions to the fundamental right enumerated in article 14 and 19? Article 14 is what? Equality. Article 19 is what? Freedom. Right, so एक और एक फंडामेंटल राइट था, सेवेंथ फंडामेंटल राइट, दैट वाज आर्टिकल 31, दैट वाज राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है, इसको यहां से हटा दिया गया और इसको आर्टिकल 300 ए बनाकर एक लीगल राइट बना दिया गया था। ठीक है, ये हमें पता है, राइट। इसी के अंडर में, ठीक है, एक्सेप्शंस डाले गए थे कि कुछ चीजों को अचीव करने के लिए फंडामेंटल राइट्स को इग्नोर किया जा सके। ठीक है, उसको 31 ए बी एंड सी के फॉर्म में डाला गया था। ठीक है, जिसमें बी आपका मेनली इज रेस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट? 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, बचा क्या है? ए और सी। तो आर्टिकल 31 ए एंड 31 सी जो है, ठीक है, ये वो है जो कि एक्सेप्शंस हैं फंडामेंटल राइट अंडर राइट टू इक्वालिटी और राइट टू फ्रीडम के को नजरअंदाज कर सकते हैं एक ग्रेटर गुड, एक ग्रेटर एजेंडा को अचीव करने के लिए। ठीक है, तो ये तो वे बहुत बहुत आसान क्वेश्चन है, बिकॉज आर्टिकल 31 इज द बेसिस फॉर इट। ओके, सम ऑफ द एक्सेप्शन प्रोवाइडेड टू लॉज, ओके, टू बी अचीव्ड अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट। राइट, नेक्स्ट, which one among the following statement pertaining to the president's term of office is not correct? ठीक है, प्रेसिडेंट टर्म ऑफ ऑफिस, फिर से वर्ड क्या दे दिया इन्होंने? नॉट करेक्ट, राइट। द प्रेसिडेंट होल्ड्स ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 year। ठीक है, क्या गलत है क्या? बिल्कुल सही है। द प्रेसिडेंट में बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस बाय वे ऑफ इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट वर्ड एक्चुअल में सिर्फ प्रेसिडेंट के लिए होता है। ये हम लोग इसको कई लोग यूज कर देते हैं फॉर द जजेस एंड चीफ जस्टिस एंड रेस्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। द वर्ड इम्पीचमेंट इज जस्ट फॉर द प्रेसिडेंट, borrowed from the US Constitution. Okay, the president may resign before the expiration of his term by writing to the speaker. अरे कॉमन, वेरी इजी क्वेश्चन, स्पीकर को क्यों रिजाइन करेगा भैया प्रेसिडेंट? President will hand over his resignation to the vice president, and the vice president would do the same thing, right? The president shall, notwithstanding the expiration of his term, continue to hold office until, बिल्कुल ठीक है। इंडिया में हमेशा एक रिपब्लिक, रिपब्लिक मतलब इंडिया इज अ रिपब्लिक, रिपब्लिक मतलब यहाँ पे राजा महाराजा मोनार्की नहीं, यहाँ पे प्रेसिडेंट है, हु इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एंटायर इंडियन पब्लिक। गवर्नमेंट इज नॉट द एंटायर रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिया, द प्रेसिडेंट इज। ठीक है, इसलिए वो अपने आप में एक पार्लियामेंट है।
लोकसभा, राज्यसभा एंड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जब प्रेसिडेंट साइन करता है तो ये कहता है कि हाँ, इंडिया के लोगों ने अप्रूव किया है इस बिल को। फाइन। अगर ये चीज, छोटी चीज को ध्यान रखेंगे तो आप प्रेसिडेंट के इलेक्शन में इतने लोग पार्टिसिपेट क्यों करते हैं, सब बात समझ में आ जाएगी आपको। ठीक है, तो इसमें सी ऑप्शन is the not correct one. He resigns to the vice president. Now, next, which one among the following is not necessary condition for issue of writ of quo warranto? While discussing the CDS in the last video of polity, one session, one video we had of polity, it would have just go through that session and see how it would have helped you in this examination. Okay, I told you there are 5 writs and they are very important. And I told you in that particular video that one question will come from the writ directly. Okay, को वारंटो को के बारे में पूछ लिया है। ठीक है, पर्सनल लिबर्टी को लेकर ये रेट इशू होता है और इसकी कंडीशंस डालती है। अब इसमें से फिर उन्होंने क्या पूछा है, नॉट नेसेसरी। ओके, आर यू गेटिंग इट? द एंटायर पेपर द वर्ड नॉट इज बीइंग यूज्ड कंटिन्यूअसली, ओके, to see the in-depth understanding of the students, right? The office must be a public office, बिल्कुल ठीक है, private office पे नहीं हो सकता ये। The office must be created by the statute of the constitution itself, yes, that is also correct. The office must not be a, no no, it has to be a substantive office। ये point B और C तो contradict कर रहे हैं एक दूसरे को। The office must be created by the statute or by the constitution itself, that means it's a very substantive one। Then next point you're saying the office must not be a substantive word, तो दोनों में से दोनों सही तो हो ही नहीं सकते, right? So by default this is C, is the not necessary condition. There has been a contravention of the constitution or a statute in appropriating such person to that office, yes, that is also correct, even if you're not aware about it। okay, if you read this too and you understand the only language, नहीं समझ में आ रहा, हिंदी में भी पढ़ लीजिए। even आप इंग्लिश मीडियम से हैं तब भी आप हिंदी में पढ़िए, many a times it helps also। okay, ये दोनों कॉन्ट्रडिक्टिंग हो जा रहे हैं। सी इज द नॉट नेसेसरी ऑप्शन। ओके, which one of the following commission is related to article 338? Did I take it in polity session or not? I took it। I did not only tell you about 338, I told you about 338A and the recent 338B because of other backward classes को अभी recently बनाया गया है, तो ये ज्यादा फोकस में था, इन्होंने इससे फोकस पे हटाकर इसका पूछ लिया, as simple as that। 338 किसका है? बाइफरकेशन हो गया, पहले एक थे, दो में बाइफरकेट हुए, तो शेड्यूल कास्ट वाले को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई थी कि बैकवर्ड क्लासेस का भी आप ही देखोगे। ठीक है, किसको दी हुई थी? शेड्यूल कास्ट वाले को दी हुई थी, कमीशन को। अब इसको भी अलग क्रिएट कर दिया गया है, तो 338A इज कंसर्न विद द शेड्यूल ट्राइब्स। Next, August 12th is celebrated as, it's a very factual, current related or event related question. So there is nothing more you can do about it. If you have ways to remember, fine. If not, it's okay. This kind of question, if you don't are not able to, because there are so many days, right? So you might remember few, you might not remember few. So it's a bonus, non-bonus kind of question. It is the International Youth Day, 12th of August. Fine. Which one of the following countries has chosen the name Nisagar for the cyclone which devastated the coastline of Maharashtra and Gujarat? Okay. कैसे अब इसको आप करोगे? मान लो आपको नहीं याद, नहीं पढ़ा आपने, रिमूव कैसे करोगे? पहले आप ये समझिए, जो इंडियन ओशन रीजन है, ठीक है, इधर पे जितने भी कंट्रीज हैं इंडियन ओशन रीजन, इनकी एक कमिटी होती है, एक ग्रुप होता है कंट्रीज का, जिसमें ओमान ओमान सब इंक्लूडेड हैं, जो इंडियन ओशन को शेयर करते हैं। ठीक है, आपके सार्क के कंट्रीज हो जाते हैं उसमें, मालदीव, श्रीलंका, मॉरिशस, ये सारे कंट्रीज हो जाते हैं। ठीक है, यो बांग्लादेश इज देयर। ये सारे कंट्रीज ना अपना लिस्ट बना के देते हैं अपने तरफ से कि क्या नाम होने चाहिए साइक्लोन के, और टर्न बाय टर्न ना उनके दिए हुए नामों से इन साइक्लोन्स के नाम रखे जाते हैं। ठीक है, तो निसर्ग जो है, दैट इज द नेम। जापान हटा दो, ये हटा दो, ये दोनों तो आते ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि इट गोज टुवर्ड्स द, ये तो पैसिफिक में चला गया, ये भी इंडो पैसिफिक रीजन की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो बचे ये दोनों, इसमें से बांग्लादेश वाज द कंट्री दैट गेव द नेम फॉर निसाग्र, राइट? What I wanted to say by bringing it out to two option is, okay, when you, even if you have no idea, जिसको पता है वो तो तुरंत पढ़ के मार्क कर देगा बांग्लादेश, जिसको नहीं पता है वो कॉमन सेंस करके चार से ऑप्शन को दो पे तो ले आया। जब आपको दो पे ले आया तो आपको अटेम्प्ट करना ही है उसके बाद, फाइन। Because if you are attempting 5 questions where your confusion was between the two questions, okay, the probability is 50-50, right?
Even if you get two questions right and three wrong, still you are gaining marks. Okay, by that you have to be smart about it. Okay, who among the following played the role of Shakuntala Devi in the biopic movie based on the, ये तो सबके सब करके आए होंगे, ठीक है, विद्या बालन was the one playing Shakuntala Devi. GC Murmu was who was appointed as the CAG of India in 2020 was the Lieutenant Governor of which one among the Union Territory. अगर आप नॉर्मली रोज न्यूज देखते भी हो, पढ़ना छोड़िए, तब भी आपको इसका आंसर होगा, क्योंकि जब जम्मू एंड कश्मीर पिछले 2 सालों में बहुत ज्यादा फोकस में रहा था, आर्टिकल 370 was being removed, जो रिमूव हो गया 5 अगस्त को. ओके, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम he was the lieutenant governor, the administrator of Jammu and Kashmir, and he was, that's why, very much into focus. Okay, so the answer is Jammu and Kashmir. Which one of the following state is planned to host the Khelo India Youth Game? Okay, Khelo India Youth Game, fourth edition. Again, it's a fact-based question. The answer would be Haryana. Right? Next, which one among the following is not a coral reef island? ग्रेट बैरियर रीफ तो बहुत फेमस है, ठीक है. अब मान लीजिए आपको नहीं पता, मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूं आप में से किसी को भी कि आपको ये सारे के सारे आइलैंड्स पता होंगे और ये भी पता होगा ये कोरल है कि नहीं है. कैसे सॉल्व करोगे? ये 100% सही होना चाहिए था आपका. इट इज लाइक पिकिंग द ऑड वन आउट. हाउ इज इट पिकिंग द ऑड वन आउट? when you talk about coral reef, what are the conditions for coral reefs? That you need warm water. Warm water means what? It needs to be between Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. You cannot go into the temperate region for that. Okay. Be it be Australia, which is actually it is one of the most famous coral reef, the Great Barrier Reef. Okay. Then you talk about Fiji, it is near equator. India, okay, again in the same region. Japan, it goes beyond 30 degrees. Okay, so that is why it doesn't have the criteria for having proper corals. It is another point is जापान के जितने भी आइलैंड है वो वॉल्केनिक आइलैंड है, क्योंकि जापान पैसिफिक के रिंग ऑफ फायर में आता है. जानते हैं आप माउंट फूजी पड़ा है, वहां अर्थक्वेक्स भी ज्यादा आते हैं, सिस्मिक जोन पे है, रिंग ऑफ फायर पे है, तो इट इज अ वॉल्केनिक आइलैंड. सो डी इज द आंसर, दैट इज इट इज नॉट a coral reef island. Okay. Since 2014-15, India has consistently run trade surplus with which one among the following countries? ठीक है, चलिए अब इसका आंसर देख कैसे करेंगे. चाइना हो सकता है क्या? चाइना के साथ तो मेजर इशू है कि ट्रेड इम्बैलेंस है. वो हमको एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा करता है, हम उससे इंपोर्ट, वो हमें एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा करते हैं, हम उसको एक्सपोर्ट बहुत कम करते हैं. ट्रेड सरप्लस का मतलब क्या है? कि जितना आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, मतलब अगर ए और बी कंट्री की आप बात कर रहे हो और ए का आपको पता करना है कि इसका बी के रेस्पेक्ट में ट्रेड सरप्लस है कि डेफिसिट है, तो मतलब क्या है? जितना ये इसको एक्सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, उससे कम ये इंपोर्ट करेगा. मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट मस्ट बी अ पॉजिटिव. ठीक है, चाइना इज डेफिनेटली नॉट दैट कंट्री. चाइना के साथ तो इंडिया का मेजर प्रॉब्लम है ट्रेड इम्बैलेंस का. ठीक है. सऊदी अरेबिया हो सकता है क्या? कोई भी ऑयल रिच कंट्री हो सकता है? नहीं, क्योंकि इंडिया में तो ऑयल है नहीं. इंडिया को ऑयल इंपोर्ट करना पड़ता है, 85% रिक्वायरमेंट अपनी करीबन इंपोर्ट करनी पड़ती है. तो कोई भी ऑयल रिच कंट्री होगा, ईरान ले लो, इराक ले लो, कुछ भी ले लो, आप जितने का ऑयल खरीद रहे हो उतने का सामान आप नहीं बेच रहे हो, क्योंकि आपकी ऑयल रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है. सऊदी नहीं होगा. तो क्या हो सकते हैं? इन दोनों में से कोई एक हो सकता है. ठीक है. Germany is quite a small country. Okay, economy is big, but US is one of the biggest economy. और इंडिया और यूएस के स्ट्रैटेजिक टाइज का बेसिस था, जो इंडिया और यूएस के बीच में स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप और डायलॉग्स होते हैं 2+2, उसका बेसिस ये था कि यूएसए इंडिया के लिए अपनी इकोनॉमी खोलेगा, क्योंकि यूएसए इंडिया को चाइना के अगेंस्ट में ताकत देना चाहता है. सेकेंड, यूएसए इंडिया को अपना पार्टनर बनाना चाहता है. अभी रिसेंटली अनदर एग्रीमेंट हुआ है जिसमें यूएस अपनी इंटेलिजेंस, सैटेलाइट इंटेलिजेंस और बाकी चीजें इंडिया के लिए, इंडिया के साथ शेयर करेगा. जब ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन आया था तो वो इसी पॉइंट को लेकर काफी फैले थे, 2-3 बार कमेंट भी कर दिया था. आपको इसका बहुत ज्यादा सुनाई दिया होगा हार्ली डेविडसन की बाइक को लेकर. ठीक है, कि हम इंडिया से बाइक्स लेते हैं और हम उस पर ड्यूटी नहीं लगा रहे हैं, मतलब टैक्स नहीं लगाते हैं, मतलब हमने अपना दरवाजा खोल रखा है, इंडिया हम पर हेवी ड्यूटी लगाता है. तो उसके बाद नरेंद्र मोदी ने हार्ली डेविडसन के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटीज कम करी थी, लेकिन अब वैसे भी वो बाइक कंपनी इंडिया से मूव आउट कर रही है.
ठीक है, तो यूएसए इज द आंसर। इट इज मच बिगर इकोनॉमी, इट हैज मच मोर स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट विद इंडिया, इंक्लाइंड अगेंस्ट चाइना। ठीक है, क्वाड का पार्ट है, बायलैटरल मीटिंग्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आंसर इज सी। Arrange the following countries in descending order as per the Global Human Development Index 2019. Arrange the following countries in descending order as per the Global Human Development Index. Human Development Index, ठीक है, एचडीआई की बात कर रहे हैं। एचडीआई का मतलब क्या है? वैल्यू ऑफ ह्यूमंस, ओके, एजुकेशन, हेल्थ केयर, रेस्ट ऑफ द थिंग्स। ओके, तो सबसे पहले तो ये चीज है कि डेवलपिंग कंट्रीज का हमेशा डेवलप कंट्रीज से ज्यादा ऊपर होगा। जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनका डेवलपिंग कंट्रीज से एचडीआई बेटर होगा परफॉर्मेंस में। सेकंड, हमेशा आप जब स्कैंडिनेवियन कंट्रीज की बात कर रहे हैं, करते हैं यूरोप की, डेनमार्क, स्वीडन, ये हमेशा टॉप करते हैं इनमें। ठीक है, तो यूरोप हमेशा इस पे काफी फोकस भी करता है और काफी अच्छा परफॉर्म भी करता है। सेकेंड चीज है, अगर आपका कंट्री बहुत ज्यादा बड़ा है और उसकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो आपका एचडीआई बहुत ज्यादा नहीं अच्छा हो सकता है, क्योंकि आपके चैलेंजेस ज्यादा रहेंगे। ठीक है, ये सारे कंट्रीज का एक और एक रीजन है जिस वजह से स्वीडन, डेनमार्क और ये सारे कंट्रीज अच्छा परफॉर्म करते हैं, बिकॉज दे आर वेरी स्मॉल कंट्री, दे हैव अ वेरी स्मॉल पॉपुलेशन, दे आर वेरी इजीली मैनेजेबल, राइट। तो यहाँ पर पहली चीज तो साउथ ऑफ इंडिया, सब आपको पता है एचडीआई में सबसे नीचे इंडिया आएगा, क्योंकि आपका यहाँ पे कंपैरिजन किन दो में है? दो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, दो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, तो ये तो पता चल गया। पहला दूसरा नंबर जर्मनी यूएसए का बीच में होगा, तो तीसरा चौथा नंबर साउथ अफ्रीका और इंडिया के बीच में होगा, राइट। साउथ अफ्रीका इंडिया से बेटर है एज फार एज द ह्यूमन डेवलपमेंट एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर कंसर्न। ओके, सो तीसरा नंबर साउथ अफ्रीका का, चौथा ये जर्मनी, जो कि स्मॉलर है इन कंपैरिजन टू यूएसए बोथ बाय साइज एंड पॉपुलेशन एंड आल्सो बीइंग अ पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन, इट इज वन ऑफ द बेटर परफॉर्मिंग। सेकेंड, तो जैसे कि जर्मनी की रैंक जो एचडीआई में है वो फोर्थ है, यूएसए की रैंक 15th है, साउथ अफ्रीका की ओवर 100 और इंडिया की तो अराउंड 140 150 अराउंड इतनी रैंक है। यू डोंट नीड टू रिमेंबर द नंबर, जस्ट यूज योर कॉमन सेंस एंड यू कैन सॉल्व इट, राइट। सो द आंसर इज ए, 1 2 3 4, राइट। As per the use-based classification of the index of industrial production, the maximum weight has been assigned to which? Okay, आईआईपी जो है ये बास्केट बनाता है जिसके बेसिस पे, ठीक है, इट इज एबल टू क्लासिफाई एंड प्रोवाइड वेटेज टू डिफरेंट डिफरेंट कंज्यूमर गुड्स, राइट। तो इसमें जो है consumer non-durable, consumer durable, intermediate good, and primary good. You just need to use your common sense. Obviously, the primary good would have the highest weightage in IAPs, right? Because they are the primary products. It has over 30%. It has more than 30% weightage in the primary goods, right? So the answer for this would be A. Normally, there will not be a shift in the demand curve when, okay, a bit technical question, okay. So here प्राइस ऑफ द कमोडिटी फॉल्स, ठीक है, कमोडिटी का दाम गिर जाता है, कंज्यूमर वांट टू बाय मोर एट एनी गिवन प्राइस, तो ऑब्वियसली इससे क्या है, डिमांड कर्व, ठीक है, विल शिफ्ट, क्योंकि कंज्यूमर की जो डिमांड है वो बढ़ रही है एट ए गिवन प्राइस। एवरेज इनकम राइजेस व्हेन द इनकम जब बढ़ेगी तो वो उसकी खरीदने की कैपेसिटी भी बढ़ेगी, तो उसकी डिमांड भी बढ़ेगी, एंड द पॉपुलेशन ग्रोथ, okay, number of people rising, okay, again it will increase the demand because there are more buyers, okay. So all these three things are directly linked to the demand curve, while the price of commodity falling is not directly linked to the demand curve, so the answer would be A. Sorry, a market in which there are a large number of firms, homogeneous product, infinite elasticity of a demand for an individual firm, and no control over price by firms is termed as. In our CDS economic session, we discussed this thing exactly. Go back into that session. Exactly this definition itself I had written over there. और सेम का सेम उठकर आ गया है क्वेश्चन। मैंने आपको इन हर एक चीज की डेफिनेशन लिख कर दी थी, वहां पे मैच द फॉलोइंग था उस फॉर्म में, ठीक है। इन्होंने उल्टा कर दिया, इन्होंने डेफिनेशन दी थी, आप पूछ रहे हैं कि ये कौन सी चीज है। बहुत ज्यादा फर्म्स हैं, एक जैसा प्रोडक्ट है, ठीक है, तो सबके पास ऑप्शंस होंगे कहीं से भी खरीदने का, ना किसी को, अगर आप प्राइस में चेंज कर रहे हो कोई खास फर्क पड़ने नहीं वाला है उससे, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, दिस इज अ परफेक्ट डेफिनेशन ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, राइट। सो आंसर डी,
That entire, if you had gone through that discussion, those two discussion that we had, you would have been able to solve 5 or 6 questions in this paper itself, right? Now, which one of the following statement with regarding to ozone is not correct? बहुतों को बर्बाद किया होगा इस नॉट करेक्ट वर्ड ने इस बार. Okay. Ozone is found mostly at 15 to 55 kilometers in the atmosphere. और ओजोन कहाँ पे मिलता है? आपका लोअर ट्रैपोस स्ट्रेटोस्फेयर से लेके अपर स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में मिलता है. तो आपका जो जो ट्रोपोस्फियर है वो कहाँ से रहता है आपका? 0 to अराउंड 18 डिग्री, 8 सॉरी 8 से 18 किलोमीटर, सॉरी 8 से 18 किलोमीटर की हाइट पर, वेरिंग अबाउट द पोल पे थिन रहेगा, इक्वेटर पे ज्यादा रहेगा, क्योंकि आपका वेरिएशन ज्यादा है, हीट ज्यादा है, एनर्जी ज्यादा है. ठीक है, उसके ऊपर बिल्कुल, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. ओजोन इज प्रोड्यूस्ड बाय गैसियस केमिकल रिएक्शन. यस, ओजोन एक नेचुरल प्रोसेस है. ओजोन का ओजोन इज नॉट समथिंग दैट इज ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ओजोन क्लियर का प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, लेकिन ओजोन का प्रोसेस जो है वो हमेशा से था. दैट इज O2 plus O is a reversible reaction that is providing O3. O3 is what? O3 is ozone. ठीक है, दिन के टाइम पे क्या होता है? दिन के टाइम पे O2 और O टूट कर आपके जो है जुड़ता है. जस्ट अ सेकेंड, यू नीड टू रब दिस. यस, सो at the daytime, because of sun rays which acts as catalyst. Okay, so during the night time, this would be the night, and during the daytime the O3 would break into O2 and O, and during the night time it would recombine to form ozone. ये प्रोसेस है जो कि एक नेचुरल प्रोसेस है जो होता है, लेकिन बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन, ओके, the chlorine and rest of the HCFC gases and rest of the refrigerated gases that were being used. Um, what happened was, when this breakup took place, obviously this is not a stable compound. So what it used to do, the spare oxygen would run away with something which it had more affinity with. ठीक है, तो फ्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, इन सब के साथ ये भाग जाता था, और इसके वजह से ये O3 वापस फॉर्म नहीं होता था. और ओजोन तो अच्छी चीज है, ओजोन प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम अल्ट्रावायलेट हार्मफुल रेज ऑफ द सन, एंड दैट वाज नॉट बीइंग एबल टू form. So what is this? This is a gaseous. Yes, it's a gaseous chemical reaction. 16 November is celebrated as the International Day for Preservation. I don't have any idea whether it is true or false. Okay, so what we are going to do, we are going to leave it and we are going to read the next. Ozone is a form of oxygen in which 3 oxygen atoms are bonded together. That is what this formula is. तो हमें ये पता है, दिस वन इज डेफिनेटली करेक्ट, वी नो दिस इज डेफिनेटली करेक्ट, कोई डिफिकल्ट ऑप्शन भी नहीं है कंफ्यूजन. और तीसरा उसका O3 को ही ओजोन बोलते हैं, तो ये भी करेक्ट है. तो बाय डिफॉल्ट क्या हुआ, थियरी ऑफ एलिमिनेशन की वजह से योर सी इज द right answer. That 16th November would not be the day, although I do not think that such kind of questions based upon the date should be asked, because it doesn't actually check your knowledge per se. But still, it would not be 16th November, and you can be dead sure about it that this answer is correct. Now, Sea of Azov is connected to, many questions have been asked based upon the map. Okay, so again it is based upon map. If you have the knowledge about the map and you have read the map, then you will be able to solve it very easily, that it goes into the Black Sea. Now, climb mine, okay, the largest producer of molybdenum is located where? Okay, again it becomes upon your understanding of the world geography, the physical features, the minerals and all. Okay, Colorado is a place in United States which is known for mining of molybdenum. Okay, so the answer would be B, that is United States. Which one among the following union territories of India is the smallest in geographical area? Even without reading the option, if there is Lakshadweep, it has to be that only. Okay, Chandigarh, Pondicherry, Dadra Nagar Haveli, Daman and Diu. Which one among the following union territories of India is the smallest in geographical area? Even without reading the option, if there is Lakshadweep, it has to be that only. Okay, Chandigarh, Pondicherry, Dadra Nagar Haveli,
Look, when you see, if you write about Andaman and Nicobar, it has huge big islands. But if you talk about Lakshadweep, they are very, very small islands. Okay, collection of very, very small islands. Okay, so Lakshadweep would be the smallest in geographical area, right? Buenos Aires and Montevideo are the situated across the banks of. Okay, fine. Four rivers are given and two places are given, and they're asking where is it situated with. Okay, we know that Buenos Aires is the capital of Argentina, right? So the answer would be the river that flows into that particular region, that is river Plate. Again, on the basis of map, this question has been asked, and it should have been an easy one for you. The largest barrier reef system in the world is found at. Just before we had, there are now another question on coral reef. Okay, coral is a very important geographical topic. Okay, ma'am must have told you about that. So I've already discussed about the barrier reef of Australia. That it is Great Barrier Reef is one of the biggest one. Okay, which is the biggest one in that the East Australian coast near Queensland in Australia. Okay, Australia में this side is the east here. Okay, Queensland के coast way is the this the biggest largest barrier reef, so it would be the East Australian coast. Again, this is not a difficult one, it is an easy question. You just have to have a basic understanding of mapping. Okay, during the 19th century, who among the following wrote Satapatra series? ठीक है, ये हिस्ट्री से क्वेश्चन है, और हिस्ट्री से क्वेश्चन इस बार थोड़े से नॉन नॉन ट्रेडिशनल काइंड ऑफ आए. ठीक है, तो those are the question which it felt as if the examiner knew what kind of books most of the students are reading, and he wanted to give questions which are not being covered under those books. Okay, Satapatra series, okay, was written by Deshmukh, okay, who is also known as who? Lokit Wadi. Okay, in Maharashtra, he used to write the Satapatra series in the 19th century, right? Which one of the following was not a demand made by the Congress moderate? Okay, fine. कांग्रेस मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट, ठीक है, हम जानते हैं दोनों स्प्लिट हो गए थे 1907, और दोनों बाद में लखनऊ पैक्ट के अंडर में साथ आए थे. मुस्लिम लीग और कांग्रेस भी साथ में आई थी. दोनों में अंतर क्या था? इट वाज लाइक lot of things, later on, the way the changers and no changers had the demand. Similarly, the moderates and extremists. Moderates क्या थे? Moderate wanted to pray and petition with the Britishers. They were not against the British rule, they just wanted self rule, but they did not want to overthrow British. तो मतलब क्या, उनको पूर्ण स्वराज नहीं चाहिए था, उनको डोमिनियन स्टेटस चाहिए था, और उन्हें लगता था ब्रिटिशर्स का होना अच्छा है इंडिया में. ठीक है, दे वांटेड टू वर्क अंडर द ब्रिटिश सिस्टम. व्हाट दे वांटेड वाज कि ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडियंस को अपने सब्जेक्ट्स की तरह ट्रीट करे. क्वीन हमारे इंडियंस को सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करे, और जैसे ब्रिटेन में ब्रिटिशर्स को ट्रीट कर रही है, उसी तरीके से इंडियंस को भी ट्रीट करे. दिस इज व्हाट दे वांटेड. Extremists had a very different ideology. They said that this is a foreign rule. Okay, they are foreigners. They are never going to accept us as their own, and we have to overthrow them. Otherwise, we'll always be exploited and suppressed. Right? Obviously, moderates were not right. They did not have the understanding um, of the structure of the colonial rule, the imperialism, and how economically exploitative that was. Okay, so definitely they had made a blunder at that point of time. So इस इनका जो फिलॉसफी है उसको ध्यान रखते हुए अब पढ़ो. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, आप ब्रिटिशर्स को वोट करने को देते हैं, आप हमें वोट करने को दो. यही तो डेमोक्रेटिक राइट चाहिए. डोमिनियन स्टेटस का मतलब क्या है? हमारी सरकार होगी, आपकी रानी होगी. जैसे कि ऑस्ट्रेलिया फॉलो कर रहा था, कनाडा फॉलो कर रहा था, जहां अभी भी क्वीन ऑफ इंग्लैंड ही है, वहां प्रेसिडेंट नहीं होता है. क्यों? क्वीन ऑफ इंग्लैंड को ही वो लोग अभी तक मानते हैं. तो इंडिया को भी उसी तरीके से ये लोग मांग रहे थे, तो ऑब्वियसली ये उन्होंने मांगा था. रिपील ऑफ आर्म्स एक्ट 1878 में आपके लॉर्ड लिटन, ठीक है, आर्म्स लॉ एक्ट को लेकर आए थे, और उसको रिपील करने की डिमांड तब से चल रही थी. ठीक है, तो ऑल द इंडियंस वेर इन फेवर ऑफ दैट. तो अगेन दिस इज ऑल्सो द डिमांड दैट दे मस्ट हैव मेड. ये पूछ रहा है नॉट, अगेन नेगेटिव सेंस में क्वेश्चन पूछा गया है, वाज नॉट ए डिमांड मेड. ये तो पक्का डिमांड किया है, ये भी डिमांड किया होगा. एक्सटेंशन ऑफ परमानेंट सेटलमेंट.
परमानेंट सेटलमेंट कॉर्नवालिस लेकर आए थे, एंड कॉर्नवालिस वाज यूजिंग इट एट ब्रिटिशर्स यूज्ड इट एज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर एक्सप्लॉइटिंग the Indian tax system from land reforms, from land revenues. Okay, so this was no way any Indian would have supported it. ओके, तो ये तो सुसाइडल हो जाता पॉलिटिकली अगर कांग्रेस में होते हुए आप परमानेंट सेटलमेंट को सपोर्ट छोड़ो, उसके एक्सटेंशन की डिमांड करो। ये अपने आप में एक फूलिश डिमांड लग रही है। तो ये तो सवाल ही नहीं उठता कि कोई भी गवर्नमेंट इंडिया, कोई भी इंडियन इसको सपोर्ट करेगा। हायर जॉब्स फॉर इंडियंस इन द आर्मी, यस, इंडियन आर्मी में आपके इंडियंस के लिए हाईएस्ट रैंक सूबेदार फिक्स कर रही हुई थी। So Indians wanted and expected, and rightfully they wanted to have a higher rank in the Indian army. So here the दिस इज ऑल्सो डेफिनेटली राइट। कॉमन सेंस लगाना है। मॉडरेट क्या चाहते हैं आप, हमको अपना मान के चलिए, अपना मान के चलते हैं, हमको वोट करने दीजिए, सरकार बनाने दीजिए, ये आर्म्स एक्ट हटाइए जो इतने साल से गलत लगा हुआ है, हमारे लोगों को आर्मी में भी रैंक दीजिए, भेदभाव मत करिए। दे डिडंट वांट डिस्क्रिमिनेशन फॉर बीइंग इंडियन, कि हम आप ही के लोग हैं। ठीक है, ट्रीट अस एज योर सिटीजन। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज नॉट अ डिमांड दैट वाज मेड बाय द moderates, right? Okay. Who among the following founded the Mohammedan Anglo-Oriental Defense Association? Very easy. Who founded the Muhammad Anglo-Oriental School that became the Aligarh Muslim University? Sir Sayyid Ahmad Khan in 1880s, I think. Okay. Uh, he was, look, after 1857, what happened was the Britishers suppressed the Muslim, blaming them for the revolt because the Mughal Emperor Bahadur Shah was there, the leader of the um, from Meerut, okay, uh, the Bhakt Khan, and rest were also Muslims. So they blamed them and they started suppressing them. So, Sir uh, Ahmad Khan was a reformist. Okay, he wanted, because Muslims at that point of time were very conservative. They were not ready to accept, everything was based upon Quran, and they were not ready to accept the Western education system. Okay, and Sir Ahmad Khan realized that if Muslims do not accept and do not educate and do not reform themselves, they will end up being the second class citizen in their own country. Okay, and he saw that other communities are learning and moving forward, getting into government services. Okay, and the Muslims would be left out, and that is why he started advocating Muslim education, Western education, scientific education, and he took help of Quran to prove his point. But even he was very much there were a lot of opposition to his thoughts and ideas. Fatwa tak jari hua tha inke against mein. Okay, but he was a reformist. Okay, and he wanted Muslims to have better education and better opportunities in the British government. Okay, after later on, after the formation of Congress, he became slowly anti-Congress, and his entire agenda derailed from pro-Muslim to anti-Congress. Okay, so he created the Mohammedan Anglo-Oriental Defense Association, which mainly worked as an anti-Congress association. Okay, after the First World War, the Triveni Sangh was formed by, okay, Triveni Sangh was formed in the region of Bihar, where the backward caste, okay, created this to redress their grievances, right? So पहली चीज, हम ज्योग्राफी पे चले जाएं तो हम अब बिहार की बात कर रहे हैं, तो जाट एंड गुज्जर वहां पे नहीं है, राजपूत थोड़े हैं, यादव है मेनली। ठीक है, जाट्स फिर से नहीं है। Ayers and Kurmis were the main people who started this and are still a major section of population of Bihar। और आहिर्स और यादव एक ही चीज होते हैं। ठीक है, तो बोथ आर द सेम थिंग। तो यादव एंड कुर्मीज, दैट इज अहिर्स एंड कुर्मीज, so option D is the right option। what we are going to is the Triveni Sangh was a caste coalition, a political party established in Shahabad district of Bihar in pre-independence India to voice the political solidarity of middle class peasant, as well as to carve a space in democratic politics for the lower caste। The Triveni Sangh was formed in 1934 by the members of three backward castes of Bihar, namely Yadav, Koiri, and Kurmis. So Yadav is also Ahirs, right? So this is the right option. Okay. We'll take a 5 minute short break and then we'll continue. Okay.
Okay. So, who among the following was the first to accept a ministerial position in the central province in the October 1925? Okay. Again, this comes down. Earlier, we have discussed about the moderators and the extremists. Now, here, what happened is after the Khilafat movement, the when Gandhi pulled back the movement, the again the Congress was divided into changers and no changers. Okay, the no changers were supporting that the movement, the revolt needs to go on, and no non cooperation should continue, and the changers wanted to be a part of the electoral process. They wanted to join the elections, participate in them, and by getting inside the government and functioning inside the government, they wanted to represent the people and lead the movement from inside the government, right? So one of the changers, uh, the question is asked based upon them, okay, the updates that happened. So among them, okay, SB Thambe was the person who was to accept a ministerial position in the central province in the 1925 from the changers, right? Now, next, who among the following formed the National Liberation Federation Liberal Party? Okay, now here again on the same basis, okay, changes and no changes, okay, uh, thing going on. Motilal Nehru and CR Das being the uh, old school of the Congress, okay, they had a different opinion. They finally moved away and formed their own alliances, okay. At that point of time only it was taking place, and a liberal party, a National Liberation Federation, was formed, and it was created by uh, TB Sapru and MR Jayajar. Okay, when the Montego report of 1918 was made public, there was a divide in the Congress over it that I have discussed. Okay, the moderates welcomed it while the extremists opposed it. This led to a schism in the Congress with moderate leaders forming the Indian National Liberation Federation 1990. The party was founded by Surendranath Banerjee and some of the prominent leaders Tej Bahadur Supru, V.S. Srinivasa Sastry, M.R. Jayakar. Okay, so Tej Bahadur Supru and M.R. Jayakar is the option in C, and who were responsible for formation of the Liberal Party. Now, the next question is the National Disaster Management Authority functions under the Ministry of. Okay, this is a very straightforward question. In even in NCRT, if you have read about the National Disaster Management, okay, you would have been aware about it. The head of National Disaster Management Authority is the Prime Minister, and it falls under the control of the Home Ministry. So the answer is home. Finance, it's not going to be there. Industry, it's not going to be there. Climate change, it's not going to be there because you need NDRF, you need funds, you need a proper collaboration between different ministries. So home ministry would be responsible because it needs forces also on ground. सीआरपीएफ से लेकर सारी फोर्सेस जो आपकी सेंट्रल फोर्सेस है उनको भी डेप्यूट किया जाता है. Okay, the socialist idea of Sapta Kranti, seven revolution, was proposed by. Okay, again, this is a question from history which is specific. Okay, so if you have read it, well and fine. If you have not read it, it's difficult for you to attempt the question. The answer to this question is Ram Manohar Lohia is responsible for the socialist idea. Okay, of Sapta Kranti that was proposed. Okay, he was a very hardcore supporter of Gandhi's idea. So next question, which one among the following is not a character of a secular state? ठीक है, सेक्युलर स्टेट का मतलब क्या है? सेक्युलर स्टेट का मतलब ये है कि सभी धर्मों को बराबर से ट्रीट करा जाएगा. और सेक्युलर स्टेट के दो कॉन्सेप्ट होते हैं, पॉजिटिव सेक्युलरिज्म और नेगेटिव सेक्युलरिज्म. अभी फ्रांस में जो चल रहा है, तो फ्रांस अचानक से क्या प्रमोट कर रहा है? नेगेटिव सेक्युलरिज्म को प्रमोट कर रहा है, जहां पे गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं होगा किसी भी रिलीजन से, और गवर्नमेंट सभी रिलीजन को बराबर तरीके से, बराबर राइट्स, बराबर फ्रीडम. So if you have this is what created the controversy, okay, about the Macron statement. He said that whatever the rights they have for Christians, for Hindus, the same would be available for Muslims. So if they are able to make cartoons for Christians, they will be able to make cartoons for Muslims. Okay, so they provided that there will not be any distinction or discrimination. Okay, but for some it is offensive, for some it's not offensive. Every religion has different way of looking at the religion. Every religion has a different tolerance level regarding what is acceptable to them. Okay, so based upon that, what is secular state? Okay, it refuses theocracy. This is theocracy.
थियोक्रेसी मतलब क्या है? जहां पे रूल ऑफ किसका रहता है? रिलीजियस हेड। जैसे वैटिकन सिटी है तो क्या है वो? थियोक्रेटिक है, बिकॉज पोप इज द हेड ऑफ इट। ओके, नेक्स्ट, इट सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। इट इज द डेफिनेशन ऑफ सेकुलर स्टेट इन फैक्ट, that the state would separate itself. State मतलब government, the government or the country would separate itself from the religion. Religion आपका एक पर्सनल अफेयर होगा, गवर्नमेंट उसमें इंटरफेयर नहीं करेगी, आपका पर्सनल लिबर्टी एंड राइट्स प्रोटेक्टेड रहेंगे. A state in order to be secular must be democratic. No, secularism एक idea है. It is not based upon the form of government. Okay, a communist country, if the communism in its ideology does not believe in religion. That is why it doesn't believe in any of the religion, but any of the government. India, for example, if you are reading in ancient India, you read about Akbar, and the first thing that you read about is that he was a very secular king, and he provided liberty to all the individuals. Okay, he had many Hindus in his main council. So what? Even when you have a king, what is that? It is a monarchy. Okay, मोनार्की में भी सेक्युलरिज्म हो सकता है अगर राजा सभी धर्मों को एक्सेप्ट करके चले, राइट? तो डेमोक्रेसी का इससे कोई लेना देना नहीं. इट मस्ट प्रिवेंट रिलीजन कॉन्फ्लिक्ट. यस, ये तो बेसिस होता है कि सेक्युलर स्टेट की जरूरत क्या है? कि सारे रिलीजन आपस में लड़े ना, सब साथ में मिलजुल के रहे, फ्रेटर्निटी के साथ रहे. तो ऑप्शन नंबर सी जो है, नॉट, फिर से यूपीएससी ने नॉट वर्ड को यूज करके नॉट अ कैरेक्टर पूछा है. सो दिस इज नॉट अ कैरेक्टर ऑफ ए सेक्युलर स्टेट. Rajiv, if once check no if the voice is coming or not. Okay. Next, special address by the governor refers to the address delivered by the governor. मतलब गवर्नर स्पेशल एड्रेस कब देता है? हो सकता है आपने नहीं पढ़ा, ठीक है? मैंने जब पॉलिटी डिस्कस करा था, मैंने आपको क्या कहा था कि आपका जो सेंटर है और आपका स्टेट है बिल्कुल मिरर है एक दूसरे के. ठीक है, मैंने आपको टेक्निक भी बताई थी आर्टिकल कैसे याद करना है. 89 ऐड करेंगे आप मोस्ट ऑफ द आर्टिकल्स, सारे नहीं, इसको हार्डकोर रूल नहीं बनाना है, लेकिन आपको आइडिया पड़ जाता है, राइट? जो पावर प्रेसिडेंट की है सेम टू सेम पावर, सेम टू सेम प्रोसीजर गवर्नर के. जो प्राइम मिनिस्टर कर रहा है सेम टू सेम, एक्जैक्टली सेम वर्ड इज फॉर द चीफ मिनिस्टर. What is for the council of minister at the center would be exactly the same for the council of minister for the state. So by understanding the president, you can understand this also. ठीक है? तो अ स्पेशल एड्रेस बाय गवर्नर कब देगा? जब प्रेसिडेंट रूल लगेगा, तब कोई नीड नहीं है. ही कैन एक्चुअली डिसॉल्व द असेंबली एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, मेक इट इलेजिटिमेट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. व्हेन अ नेशनल इमरजेंसी leads to dissolution of legislative assembly, the assembly dissolved हो गई, there is no need for delivering it. Okay, at the commencement of the first session after general election, at the first session of each year, the president भी ये करता है और गवर्नर भी ये करता है. प्रेसिडेंट लोकसभा में करता है और आपका गवर्नर विधानसभा में करता है. दैट इज द ओनली डिफरेंस. सो सी इज द ऑप्शन. व्हाट इज द डी? व्हेनेवर ही शी हैज कंक्लूडेड दैट नो नो इट इज नॉट इन डिस्क्रिप्शन की जब इनका मन करेगा वो असेंबली को एड्रेस करने चल देंगे. दैट इज नॉट द पावर नाइदर विद द प्रेसिडेंट नाइदर विद द गवर्नर. ओके, सो सी इज द right answer. Next, which one of the following statement in relation to the panchayat is not correct? Circle it. Not correct. Okay, legislature of a state may by law make provision with respect to composition of panchayat. बिल्कुल सही है. ये आपका 73rd अमेंडमेंट जो हुआ है, जो पंचायत का एक्ट है, उसमें मेंशन किया गया है, ठीक है, कि स्टेट पे के डिस्क्रिप्शन पे छोड़ा गया है. पंचायत एरिया मीन्स द टेरिटोरियल एरिया ऑफ पंचायत, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है. ग्राम सभा इंक्लूड ऑल पर्सन इन द इलेक्टोरल रोल. ये स्टेटमेंट जो है यूपीएससी सिविल सर्विसेज के इस साल के पेपर से ली गई है, ठीक है. तो ऑल पर्सन नहीं, जिनका वोटर आईडी कार्ड है, ठीक है, मतलब हु आर एलिजिबल टू वोट, उन लोगों का ग्राम सभा होता है. बिल्कुल ये भी ठीक है. रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर एससी एंड एसटी हैज नथिंग टू डू विद प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन. बिल्कुल गलत है. अगर आप प्रोपोर्शन में डाल रहे हो तो आप इसी बेसिस पे तो रिजर्वेशन मिलता है, ठीक है, कि कहाँ पे कितने ट्राइब्स रह रहे हैं, कितने शेड्यूल कास्ट रह रहे हैं, उसके प्रोपोर्शन में ही तो रिजर्वेशन रहेगा. तो यो बिल्कुल गलत है. इसके वजह से डी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. नेक्स्ट, which one of the following statement with regard to protective democracy is not correct? Now it is okay if you have not read this technical term as protective democracy, but you are able to understand it. No, it is a democracy that is protective. ठीक है, इंडिया क्या है? प्रोटेक्टिव डेमोक्रेसी है. अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, गरीबों को पैसा, अमीरों को ज्यादा टैक्स करता है, गरीबों में पैसा बांटता है, वेलफेयर स्कीम्स निकालता है. तो क्या है डेमोक्रेसी? क्या है? प्रोटेक्टिव है.
सभी रिलीजन को फ्रीडम दे रहा है, क्या है, प्रोटेक्टिव है। तो डेमोक्रेसी हो गया टिपिकल डेफिनेशन कि डेमोक्रेसी क्या है कि आप लोगों ने वोट करके अपनी सरकार चुनी। प्रोटेक्टिव डेमोक्रेसी क्या है कि आपकी गवर्नमेंट हमेशा इन्वॉल्व रहेगी टू प्रोटेक्ट सिटीजन। उसका काम सिर्फ लिमिटेड नहीं रहेगा कि लॉ एंड ऑर्डर देखना है, बाकी भैया जो कर रहा है सबको आजादी है। मतलब कि क्या है, आपके फंडामेंटल राइट आर कंडीशनल। ठीक है, यू माइट हैव राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, बट इट इज नॉट एब्सोल्यूट। नन ऑफ योर फंडामेंटल राइट्स आर एब्सोल्यूट, दे आर conditioned, they are restricted on the basis of national security, national integrity, okay, and the sentiments of other people also. Fine. So first one, it propounds that the citizen participation is essential. बिल्कुल, citizen participation के बिना तो डेमोक्रेसी का कोई मतलब ही नहीं है। मतलब ये है गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल। बाय दैट डेफिनेशन सिटीजन participation is the basis, it is indispensable in case of democracy. Second, citizen must be able to protect themselves from government encroachment. बिल्कुल, गवर्नमेंट आपका फंडामेंटल राइट वायलेट नहीं कर सकती है, आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अंडर आर्टिकल 32। द कोर्ट्स हैव both the supreme court and the high court under article 226 have the right to enforce, okay, individual liberty and it has the right to protect। इसका एक बहुत परफेक्ट एग्जांपल अभी का ही जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का इन केस ऑफ अर्नब गोस्वामी। इट हैज सेड एंड वार्नड द महाराष्ट्र गवर्नमेंट दैट इफ एवर द गवर्नमेंट फील्स दैट इट हैज द राइट एंड द पावर टू एनक्रोच the citizens right or individual liberty or exploit them, remember the apex court is there to protect the citizens। ठीक है, आज महाराष्ट्र गवर्नमेंट को धमकाया सुप्रीम कोर्ट ने ये कह के कि उसका चैनल वो जो कर रहा है वो सही है गलत है वो अलग क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप गवर्नमेंट के पावर्स को मिसयूज करके एक सिटीजन को हरास करने की आप कोशिश करोगे तो भूलो मत कि एपेक्स कोर्ट यहाँ पे उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ही बैठा है। ठीक है, तो उन्होंने बेल के रिगार्ड में बोला कि बिना एफआईआर को आगे किए हुए रजिस्टर किए हुए आप बेल आपको देनी ही है। ठीक है, नाउ थर्ड, इट इज कंपैटिबल विद द लेजर फेरे कैपिटलिज्म। लेजर फेरे कैपिटलिज्म का क्या मतलब है? लेजर फेरे इज द वेरी बेसिक वेरी क्रूड फॉर्म ऑफ कैपिटलिज्म दैट वाज बीइंग फॉलोड इन यूनाइटेड स्टेट्स प्री 1930 ग्रेट डिप्रेशन। इसका मतलब क्या है? लेजर फेरे मतलब लेट गो, मतलब आजादी। आप पूरा आजाद हो, आपको जो धंधा करना है, जो बिजनेस करना है, जो करना है, नौकरी करनी है, नहीं करनी है, तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी आजादी। ठीक है, गवर्नमेंट बीच में नहीं आएगी। ठीक है, अगर आपका बिजनेस बर्बाद हो रहा है वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, आबाद हो रहा है वो तुम्हारी प्रॉब्लम है। ठीक है, गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं है। इस चक्कर में मेजर इकोनॉमी क्रैश हुई थी। ठीक है, लेकिन ये चीज प्रोटेक्टिव डेमोक्रेसी के अंडर में नहीं आएगा। क्यों? ये न्यूट्रल डेमोक्रेसी है, लेजे फेरे की गवर्नमेंट इन्वॉल्व भी नहीं हो रही है। मतलब कि क्या है, सभी पे टैक्स बराबर लगेगा, 20% टैक्स लगेगा, तुम गरीब हो या अमीर हो। तो हाउ इज इट प्रोटेक्टिव? इट्स नॉट प्रोटेक्टिव, right? It's not based about welfareism, right? So this cannot be a part of protective democracy. So the answer would be C. Last one, we'll just read it. Political equality is understood in formal term as equal voting rights. That is what political equality is. Economic equality का क्या मतलब है? I have the right to opportunities. I have the right to equal pay for equal work. बराबरी, equality होनी चाहिए। Political equality क्या है? सबको हक होना चाहिए वोट करने का, right? This is what is the cradle of the Indian democracy that I was talking about, that being free, being a weak country, being a poor country, India pulled off a miracle here by providing equal voting rights to all its citizens, being a protective democracy. Okay, next, in August 2020 a blast has taken place in Beirut, okay, killing about 100 people and 1000 wounded. The blast was caused by ये। तो अगर आप सोशल साइट्स पे हो, इंस्टाग्राम यूज कर रहे हो, फेसबुक यूज कर रहे हो, अगर आप न्यूज देख रहे हो, ये आपके लिए बहुत आसान है क्योंकि इसके वीडियोस काफी ज्यादा शेयर हुए थे। अमोनियम नाइट्रेट वहां के पोर्ट पे पड़ा हुआ था काफी ज्यादा अमाउंट पे, जो इग्नाइट कर गया एंड इट क्रिएटेड ब्लास्ट दैट लेबनान का बेरूट सिटी ऑलमोस्ट गॉट डिस्ट्रॉयड फॉर इट। ओके, सो द आंसर इज बी। इजी क्वेश्चन, राइट? नाउ व्हाट इज लिटिल बॉय? Okay, you are aspiring to be in defense forces. I am sure that you have interest about the wars that happened globally. Okay, so at the end of the Second World War, to make the Japanese force surrender, United States bombed two atomic nuclear devices on Hiroshima and Nagasaki. Okay, one was named Fat Boy, the other was named Little Boy, right? The question is asked regarding Little Boy, right? Now आपको हिरोशिमा नागासाकी दोनों है ऑप्शन में, तो पहले तो ये दोनों हटा दो।
आखिरी के सीओडी ऑप्शन। अब मान लो आपको कंफ्यूजन हो गया कि अरे लिटिल बॉय हिरोशिमा में गिरा था या फैट बॉय गिरा था। ये हो सकता है, बिल्कुल नॉर्मल बात है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन क्यों हटेगा आपका, क्योंकि एक में आपका फिजन बॉम्ब बता रखा है और एक फ्यूजन बॉम्ब बता रखा है। एटॉमिक बॉम्ब उस टाइम पे टेस्ट हुआ था, उसी टाइम बना था बॉम्ब। यूएसए वाज द फर्स्ट कंट्री टू हैव इट। एक और एक रीजन था कि क्यों उसने गिराया था, क्योंकि वॉर खत्म होने पे वो यूएसएसआर को इंटिमिडेट करना चाहता था, डराना चाहता था कि मेरे पास एटॉमिक बम है। ठीक है। बाद में यूएसएसआर ने भी बना लिया था, एक्वायर कर लिया था। इसके पीछे तो मैनहट्टन प्रोजेक्ट है जिसके अंडर में न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाए गए थे यूनाइटेड स्टेट्स में। ठीक है। जो एटॉमिक बॉम्ब होता है वो फिजन रिएक्शन से होता है, और जो फ्यूजन रिएक्शन से होता है उसको हाइड्रोजन बॉम्ब बोलते हैं, जो कि उस टाइम नहीं बना था। राइट। सेकेंड चीज, एटॉमिक बॉम्ब गिराए गए थे, हाइड्रोजन बॉम्ब नहीं गिराया गया था। हाइड्रोजन बॉम्ब बहुत बड़ा होता है। ओके, उसका डिस्ट्रक्शन बहुत मेजर होता है। ठीक है। इसका रीजन था बस जापान को मेनली सरेंडर करना, और यूएसएसआर को जो कि जापान के पास में है उसको डराना। राइट। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि बी वाला तो गलत ही हो गया, फ्यूजन बॉम्ब था ही नहीं, वो फ्यूजन बॉम्ब था। राइट। नाउ नेक्स्ट, which one of the following Indian institute was approved by the Drugs Controller General of India for conducting human trials of the Oxford AstraZeneca COVID-19 vaccine candidate? ठीक है। ये क्वेश्चन आसान है कि टफ है? बिल्कुल आसान है। भारत बायोटेक भी इन्वॉल्व है वैक्सीनेशन से, और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो कि कहाँ पे है, पुणे में है, पुणे बेस्ड है, ये भी इन्वॉल्व है। अभी ये चीज आसान क्यों हो गया, क्योंकि जब भी कोई चीज बार बार न्यूज में आ रही है तो वो आसान हो गई। अगर एक बार आई है तो डिपेंड कर जाता है आपने पढ़ा है उसको या नहीं पढ़ा है, या आप रिकलेक्ट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ऑक्सफोर्ड को लेकर काफी बार ये न्यूज में आया था, क्योंकि वहां पे जो ट्रायल चल रहा था बीच बीच में वो ट्रायल रोके गए थे। ठीक है। कोई उनका ट्रायल का पेशेंट बीमार पड़ गया था, तो जैसे ऑक्सफोर्ड ट्रायल रोकता था इंडिया भी ट्रायल रोकता था। तो बार बार नाम आता था कि ऑक्सफोर्ड ने अपना ट्रायल रोक दिया, इसलिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने भी, गवर्नमेंट ने इसको ऑर्डर दिया है कि अपने ट्रायल और टेस्टिंग रोक दो। ठीक है। तो ये दोनों कोलैबोरेशन में काम कर रहे हैं, तो इसका आंसर सी है। Now next, the recent explosion near oil well in Baghdad is due to, बगदान कहाँ पर है? आज ही न्यूज में आया है ये वापस से कि आसाम में बगदान में जो ऑयल वेल पे आग लगी थी वो अभी तक जल रही है। ठीक है। एंड इट हैज बिकम वन ऑफ द लॉन्गेस्ट एवर इन इंडिया टू हैव फायर ऑन इट। राइट। तो ये आग क्यों लगी थी पूछ रहा है। ठीक है। ट्रांसफर ऑफ ऑयल फ्रॉम इट्स डिपो टू अ पाइपलाइन, अगर ऐसा होता तो ये आग इतना एक्सपेंसिव नहीं लगती। द लीकेज ऑफ मिथाइल आइसोसाइनेट, अगेन इट वुड नॉट हैव कॉज्ड द फायर इन दिस केस। द लीकेज ऑफ रेडिएशन फ्रॉम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, इसका कोई लेना देना ही नहीं है। ठीक है। डी ऑप्शन को हटा दो, सी हट गया, बी हट गया, ए रह गया। रिमूविंग द स्पूल ड्यूरिंग द ब्लो आउट कंट्रोल ऑपरेशन, दिस इज द रीजन व्हाई दिस बिकेम सो डिस्ट्रक्टिव। ब्लो आउट कंट्रोल ऑपरेशन क्या होता है कि जब आप ऑयल एक्सट्रैक्शन करते हैं, ठीक है, तो आप बहुत प्रेशर क्रिएट करते हैं और ऑयल को कंट्रोल में जमीन के अंदर दबा के रखना होता है, वरना वो फुहारे की तरह बाहर आ जाएगा। ठीक है। तो आप उसको कंट्रोल वे में आप एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। तो ब्लो आउट कंट्रोल ऑपरेशन किया जाता है बार बार, ताकि आप उस ऑयल को कंट्रोल्ड वे में एक्सट्रैक्ट कर पाए। उसको करने के लिए आप स्पूल यूज करते हैं। स्पूल इज लाइक सर्कुलर थिंग। ठीक है। पहिए टाइप होता है, चरखा टाइप होता है, जिसको यूज करते हैं इसको कंट्रोल करने के लिए। तो रिमूव कर रहे थे स्पूल, और उसके वजह से ब्लोड कंट्रोल ऑपरेशन फेल कर गया, और उस वजह से आग लगी थी। राइट। Who among the following is the architect of Ram temple being constructed? जब राम अयोध्या टेम्पल का वर्डिक्ट आया था तो हर न्यूज चैनल ने बड़े डिटेल में जो उसका ब्लूप्रिंट है, जो उसका डिजाइन है, उसको दिखाया था। और हर एक जगह पर चंद्रकांत सोमपुरा was in the news discussing, because he's not a new fellow, he's not like you just gave him that contract. He has been working on it since last 40-50 years, since 1970s, when the Ayodhya case was brought up. Right. So the answer is very easy for this one also. It just needs your general awareness and general observation, right? Next, which one of the following countries not located on tropic of Capricorn? आज मैंने आपको जैसे कहा, इक्वेटर, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, इन चीजों को थोड़ा सा ऑब्जर्व करना चाहिए, क्योंकि मैपिंग के ऊपर काफी क्वेश्चंस आए हैं। ये जो चारों कंट्रीज जिन्होंने ऑप्शन में दिए हैं, चिली, ब्राजील, पैराग्वे एंड उरुग्वे, ऑल फोर कंट्रीज आर अ पार्ट ऑफ साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। ठीक है। तो इसमें आपका चिली जो है उसके वेस्टर्न बॉर्डर की तरफ पड़ता है। ठीक है। उसके बाजू में आपका पड़ता है पैराग्वे।
छोटा सा कंट्री है। उसके बाजू में ब्राजील आ जाता है, ब्राजील के नीचे आपका उरुग्वे आता है। ठीक है, तो बिकॉज वो नीचे आता है तो उरुग्वे से पास नहीं होता है, बाकी तीनों से वो पास होता है टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। सो दैट इज व्हाई द करेक्ट आंसर वुड बी डी, उरुग्वे। ओके, now I hope that you are able to properly match your answers and you are coming to a conclusion about how you did your paper. Okay, because I was going through some of it and I don't think that anywhere comprehensively the paper has been discussed, right? So next one is 58 one question, match list 1 and list 2 and select the correct answer using the code given below. Okay, Mount Merapi, Sakurajima, माउंट वेसुवियस एंड मोना लोआ। ठीक है, अब इसमें अगेन आपको जरूरी नहीं है सारे आपको पता हो। ठीक है, माउंट वेसुवियस वॉट क्वाइट फेमस एंड इज ऑल्सो मेंशन्ड इन एनसीईआरटी बुक्स विच इज इन इटली। ओके, मोना लोआ Hawaiian island is very famous for volcanoes. Okay, and it is also famous for military point of view. Why? Pearl Harbor was situated here, right? So Mauna Loa is in Hawaii. मान लीजिए अभी हमको दो ही पता है, दो के बेसिस पे देखते हैं कि आर बी एबल टू सॉल्व द आंसर और नॉट। ए का डी का वन। ओके, दो है, दैट इज ऑप्शन ए और बी दोनों रिमूव हो जाते हैं, राइट। अब सी का टू, सी का जैसे टू आप करते हो तो ऑप्शन डी ही बचा। अब आपको ए और बी पता हो ना पता हो कोई लेना देना ही नहीं है। सेकंड चीज, आप सेकंड नाम पढ़िए, इट साउंड जापानीज। बिल्कुल लैंग्वेज पे भी आप ध्यान करिए। ठीक है, देर इज द डिफरेंस बिटवीन लैंग्वेज एंड देयर, जैसे फाउंड माउंट फूजी। ठीक है, तो उसी तरीके से द वर्ड सेल्फ साउंड जापानीज, इट्स नॉट साउंडिंग समथिंग फ्रॉम इंडोनेशिया, राइट। सो द आंसर वुड बी डी, right? Now, next question. Which one of the following is not a major tectonic plate? वेरी इजी क्वेश्चन, यू डोंट इवन हैव टू रिमेम्बर, क्योंकि सबके सब पैसिफिक प्लेट बहुत बड़ा प्लेट है। पैसिफिक में जितनी कंट्रीज है सबको इंक्लूड करते हुए चल रहा है। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडिया इंडियन सब कॉन्टिनेंट को ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट से जोड़ रहा है। अंटार्कटिका एंड सराउंडिंग ओशन प्लेट, ह्यूज प्लेट। सिर्फ सऊदी अरेबिया एक प्लेट है जो कि बड़ा रिलेटिव कंट्री स्पेसिफिक प्लेट दे रखा है। सो इट कैन नॉट बी अ मेजर टेक्टोनिक प्लेट। तो आंसर इज वेरी इजी फॉर दिस वन, दैट इज ए, राइट। Next, which one of the following is considered as the deepest point of the ocean? एक तो इन्होंने ये कॉमन कर दिया, चारों के ऑप्शन में ट्रेंच है। ट्रेंच का मतलब क्या होता है? कुआ। समुंदर की तल पर कुएं को ट्रेंच बोलते हैं। ठीक है, और मरियाना ट्रेंच जो है, इट इज द डीपेस्ट ट्रेंच इन द वर्ल्ड। अभी तक इंसान भी, कोई रोवर भी उधर नहीं जा पाया, क्योंकि प्रेशर और टेम्परेचर दोनों बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। दूसरी चीज ध्यान रखिए, ट्रेंच के आसपास कभी भी भूकंप आ गया तो सुनामी आएगा। ठीक है, दैट इज वन ऑफ द रिक्वायरमेंट। ओके, क्योंकि ट्रेन खिसकता है अंदर, खाली जगह बनती है, पानी रश करता है, जैसे बाल्टी से अगर आप फेंकोगे टकरा के दीवार से वापस आता है, वो वापस आने वाला पानी also contributes to the tsunami in a big way. That is why the 2004 tsunami in the Indian subcontinent was contributed to a great extent by Mariana Trench. Okay, 11,000 किलोमीटर डेप्थ है इसकी, पूरा माउंट एवरेस्ट घुस जाएगा, इतनी 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 डेप्थ है इसकी। Okay, so it is actually your mountain system. Mountain is uplifted, it is declined, right? So the Mariana Trench. Now next, the four planets closest to the sun are. Okay, basic definition. NCERT also, if you've read. Okay, very easy question. It is terrestrial. उसके बाद वाले गैशियस हो जाते हैं। जुपिटर बाकी डिफरेंस है ना, पहले चार बाकी चार में उनका साइज बहुत बड़ा होता है, उनका रेवोल्यूशन और रोटेशन टाइम बहुत तेज होता है। ठीक है, रेस्ट ऑफ द थिंग, ठीक है। ड्वार्फ प्लैनेट तो नहीं है, गैस प्लैनेट बाहर वाले को बोलते हैं, जायंट प्लैनेट भी वही होते हैं बाहर वाले, आउटर प्लैनेट। तो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट आर द ओनली क्लोजेस्ट टू द अर्थ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट हैव टुंड्रा वेजिटेशन? टुंड्रा के ऊपर ये दूसरा क्वेश्चन आ गया एक ही बार में। टुंड्रा मतलब मैंने आपको क्या बताया था, टिम्बर डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, क्या बताया था? एल्पाइन आता है, एल्पाइन के बाद ऊपर ये ठंडा है, और ज्यादा सबसे ज्यादा ठंडा में क्या आता है? टुंड्रा वेजिटेशन आता है, विच इज वन ऑफ द कोल्डेस्ट। आई गिव यू द एग्जांपल ऑफ साइबेरिया इन दैट रिगार्ड। ये हिमालय के भी सबसे ऊंची जो चोटियां होंगी, दैट विल एग्जिबिट दिस क्वालिटीज। ओके, सो कौन कौन से? हमने रशिया, साइबेरिया तो रशिया में आ गया बिल्कुल। कनाडा तो बहुत ही ठंडी जगह है। ठीक है, टेम्परेट के ऊपर आता है कैनेडियन रीजन।
ठीक है, अब हमको कंफ्यूजन होगा किसमें, बेलारूस और यूएसए। यूएसए में टुंड्रा वेजिटेशन नहीं होती, लेकिन है क्यों? क्योंकि कनाडा के वेस्टर्न फ्रंट में अलास्का नाम का एक लैंड है जो कि यूएसए का है, उसके वजह से आप यूएसए को भी कंसीडर करोगे। अलास्का को यूएसए ने रशिया से लिया था, बाय किया था काफी सस्ते दाम में। ठीक है, तो बेलारूस दूसरी चीज है, जो ये रीजन रहेंगे, ठीक है, वहां पे पॉपुलेशन नहीं होगी, बहुत थिनली पॉपुलेटेड होगा। दैट इज वाई कैनेडा इज सच अ बिग लैंड बट इज वेरी थिनली पॉपुलेटेड। यूएसए उसके जस्ट नीचे आता है, लेकिन वार्मर जोन में आ जाता है, तो वहां पे पॉपुलेशन बेटर है। तो इसका आंसर है बेलारूस, राइट? इजी क्वेश्चन। Now, which one of the following is not a fluvial landform? What do you mean by fluvial landform? Fluvial landforms are the one which are formed by the river system. Ma'am has already discussed geography. We are doing it again. Okay, so that you can have a comprehensive understanding and comprehensive analysis of the entire paper in one sitting, and you don't have to go through different videos and slides. Okay, so it is by river. The gorges are found by rivers in mountain regions. Okay, braids क्या हैं, बहुत सारे अलग अलग जो बन जाते हैं, that are by river system. Canyons is also similar to Jaws but differs in its width and depth. सरकी जो है ये आपका ग्लेशियर फॉर्म करता है। तो अगर आपने एनसीईआरटी का फिजिकल जियोमॉर्फिक प्रोसेस करके चैप्टर है उसमें अगर आप पढ़ोगे, तो आपका ग्लेशियर को बहुत डिटेल में डायग्राम के साथ, ऑन द राइट साइड लोअर साइड ऑफ द एंटायर पेज एंड डायग्राम इज गिवन where the entire features of glacier, your erosion is given, where Sarki is mentioned, right? In the Gandhara school of art, initially blue cyst and green phyllite were used. When did stucco completely replace stone as main material used by the Gandhara school of sculpture? Okay, so again, it is a very in-depth question regarding Gandhara school. ठीक है, जो कि ये पूछ रहे हैं कि स्टूको ने स्टोन को एज ए मेन मटेरियल कब रिप्लेस करा था। सो इट वाज डन ड्यूरिंग द सेकंड बीसी सेकंड सीई, that particular duration, because Gandhara school was a very evolving school and had been continuing for generations. Okay, so as it evolved, so the material used for the art form also kept on changing. Okay, which one of the following statement about the Gupta coin is not correct? Okay, Gupta coins are very famous in Indian history point of view. जब आप भारत को सोने की चिड़िया कहते हो और जब बहुत हम लोग बोलते हैं यहाँ सोने के सिक्के चला करते थे, तब हम गुप्ता के पीरियड को ही बात करते हैं। हमेशा से सोने के सिक्के नहीं चलते थे, उसके बाद नहीं चले, ठीक है, तांबे और कॉपर के चलने आपके चालू हो गए थे, ब्रॉन्ज के, ठीक है। So Gupta kings issued large number of gold coin known as dinar. Yes, this is a true statement. Chandragupta too, Kumar Gupta and Skanda Gupta and Buddhagupta issued silver coin. Yes, because the economy was facing some challenges at that point of time. The observers of the coins are carved with the images of the kings on the rivers are carved deities. Deities mean goddess. And yes, it's also true. The largest number of coins issued by the Guptas were of copper. Wrong. It was of gold. Okay, the largest number of coins issued by the Gupta period were of that of gold, right? Who among the following wrote the philosophy of the bomb? Where is the question? I don't think there is need to even discuss this thing. Bhagwati Charan Vohra was the one who wrote the book, The Philosophy of the Bomb. At which one of the following session of the Indian National Congress was the resolution on the fundamental rights and economic policies passed? ठीक है, फंडामेंटल राइट्स और इकोनॉमिक पॉलिसी कब पास हुई थी? त्रिपुरी सेशन में तो कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गया था, ठीक है। लखनऊ सेशन वाज वेयर द पैक्ट हैपेंड। ओके, कराची सेशन इन 1931, ठीक है। देखो इधर पे आपका लाहौर सेशन में 1929, ओके, 28 में मोतीलाल नेहरू प्रेसिडेंट थे, 1929 में जवाहरलाल नेहरू प्रेसिडेंट बने, द सन टुक द थ्रोन फ्रॉम द फादर, फर्स्ट टाइम नेहरू आए एज अ प्रेसिडेंट, ओके, और इन्होंने पूर्ण स्वराज का डिक्लेयर कर दिया। Tripuri session was a very different kind of a mess because of your Subhash Chandra Bose involvement at that point of time and not agreeing. A lot of things happened at that point of time also. Lucknow session was something else in 1916 if you are talking about it. Okay, so the moderates and the extremists came together, Muslim League and Congress came together. It was after the round table conference that happened.
ओके, 23 मार्च को जब भगत सिंह और सदगुरु बाकियों को फांसी भी दे दी गई थी, देर वॉज लॉट ऑफ हीट इन द कंट्री. Okay, there was a lot of anti-Congress movement going on at that point of time. Even Gandhi was opposed. Okay, when he appeared for the Karachi session, black flag and black roses were given to him because he did not stop the hanging of the freedom fighters. At this session itself, the fundamental right and the economic policy were passed. Right? Which one of the following town was not a center of revolt of 1857? ठीक है, again it's going to be an easy question. ठीक है, फैजलाबाद अयोध्या को बोला जाता था. Yes, it was important center. Delhi was the very epicenter, and Kanpur also was an important center. Yes, it would have given you a bit of confusion because Agra being so close to Delhi and Meerut, okay, where the entire uh, the core of the revolt was taking place, but Agra was not a center for the revolt. Now next, consider the following statement. The Azamgarh proclamation refers to आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन. जो बहादुर शाह के जो प्रिंसेस थे, who were not into limelight, they declared this proclamation जब आपके बिकॉज दैट बीफ और पिग फैट का कार्ट्रिजेस में होने का शक था, जिसके बेसिस पे दी सिपाही started mutinying. Okay, and they declared when they marched from Meerut on 10th of May, when they marched toward Delhi, they declared Bahadur Shah as the leader of the revolt to unify India. He was a very spineless leader anyways. Okay, and he was one of the reasons why the revolt did not succeed, because you did not have a powerful leadership at that point of time. So his princess actually declared the Azamgarh proclamation to narrate the intention and purpose of the revolt, कि revolt के थ्रू हम क्या अचीव करना चाहते हैं. सो दो स्टेटमेंट दिए हैं, दोनों साथ में करेक्ट नहीं हो सकते हैं, दोनों डिफरेंट टाइमलाइन पे हैं. तो वन इज करेक्ट, ओनली वन इज करेक्ट, आंसर इज वे वन. ओके. Ibn Battuta went to China as the envoy of which one of the following Delhi Sultan? Okay, Ibn Battuta. Okay, a very famous man. Okay, even songs written on him. Okay, so he was a part of Tughlaq dynasty. He was a visitor from Africa. Okay, and then he was made an ambassador by Muhammad bin Tughlaq. Okay, and on his behalf he went to visit China. So the answer is B, Muhammad bin Tughlaq. Okay. Al-Biruni, Kitab-ul-Hind was written in which language? Al-Biruni, okay, was an Persian. He was from Iran, and he came to India. And when he came to India, he got very fascinated by the Indian system. Okay, and he was very secular. He had deep interest in Indian culture and philosophy. He learned Sanskrit also, and he learned various languages and various cultures in India. But that is why when you say he came from Iran, which was Persia at that point of time, your obvious response would go toward Persian. But he used to write the book in Arabic. Okay, so the answer for this question is A, Arabic. Right? Now, next, which of the following statement with regard to the privileges of the member of parliament are correct? Okay, finally, they ask something which is correct. Okay, privileges would not be fettered by Article 19(1) of the Constitution. Okay, it is correct. Privileges must be read subject to the Article 2022 and Article 32, and that is the jurisdiction of the Supreme Court. Yes, it is also correct. Immunity is available in relation to both civil and criminal cases. No, it's not available in both civil and criminal cases. Your immunity as a member of parliament. Okay, so that is not even purely available to the president. It's definitely not going to be available to an MP. Okay, so removing this option. Okay, what we do have, we have three options. Okay, 1, 2, and 4 is correct. So option A is the right option. Okay, which one of the following statement with regard to appointment of the member of parliamentary committees is correct? ठीक है, parliamentary committees होती हैं, ठीक है, which are there are various committee where speaker plays a very decisive role because it's related to the parliament. It's not, we are not talking about cabinet committee where the government takes into prominence, but here the speaker and the chairperson of the Rajya Sabha would be in prominent. These members are both elected and appointed. Okay, so are only appointed? No. Only elected? No. Only nominated? No. The members are appointed or elected on a motion made and adopted on or nominated by the speaker of the Lok Sabha. Yes, the person can be nominated only by the
presiding officer, that is the speaker and the chairperson of the Rajya Sabha. Otherwise, he would be elected. Okay, so option D is the only option that makes actually sense, which has been explained in such a elaborate way. So obviously, that's going to be the right answer. Which one of the following is not a classification category of political parties as outlined by the Election Commission? छोटा सा टॉपिक था, एक पेज का। अगर आपने वो भी पढ़ा होता, यू वुड हैव बीन एबल टू आंसर इट। नेशनल पार्टीज होती हैं, स्टेट पार्टीज बिल्कुल होती हैं, रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टीज भी होती हैं, रजिस्टर्ड है लेकिन अभी रिकॉग्नाइज्ड अंडर नहीं है क्योंकि दे हैव नॉट फुलफिल्ड द क्राइटेरिया फॉर आइदर बीइंग द स्टेट पार्टी और द नेशनल पार्टी। रीजनल पार्टी जैसी कोई चीज नहीं होती है। ओके, सो आंसर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। Which of the following term was added by the preamble of the Constitution of India by the Constitutional Amendment 1976? We had discussed this also during the discussion on polity during the serious previous, the only single video we had before. Okay, 1976, the 42nd Amendment, known as the Mini Constitution of India, had added few. मैंने बोला था उस टाइम पे भी DPSP, preamble सबकी बात करते समय कि उन पे फोकस करो जो कि बाद में ऐड किए गए। ठीक है, DPSP का भी मैंने एग्जांपल लेकर आपको समझाया था। ठीक है, तो इन दिस केस socialist, yes. Integrity word, yes. Fraternity पहले से था। Fraternity means brotherhood among citizens. This was पहले से था। Secular, socialist, and integrity. These three words were being added. So the option would be 1, 2, 3. That is B is the correct option. Who among the following was the advisor of the Constituent Assembly? Okay. Again, this is a factual question. The advisor of the Constitution Assembly was B.N. Rao. That is option A is the right option. In the Indian judicial, because when you come to questions of polity, history, I told you they are very, very. That's why I was telling you to focus a lot on polity. Okay. Yes, they are asking question in a way that you might not. This is what I want, that UPSC started going for the topics which are not usually asked, okay, to surprise you. So you cannot leave, there is no more scope for you to leave any of the section as not so important. You have to go down in every each and every line, you have to read it very carefully. In the Indian judicial system, writs are issued by both. Under Article 32, it is issued by the Supreme Court, and under Article 226, it is issued by the High Court. And the Supreme Court can issue writs only for case of fundamental rights. We discussed it in detail, and the question came 226. It can go for both fundamental rights and normal laws also. So that means what? The writ jurisdiction of High Court is greater than that of Supreme Court. Okay, so option C is the right option. Now, the Citizenship Amendment Act falls under which one of the following part of the Constitution of India? Okay, when you're talking about Constitution of India, various parts are there. Accordingly, the articles are there. 5 से 11 तक आर्टिकल अगर सिटीजनशिप से डील कर रहा है, ठीक है, तो उस आर्टिकल को ध्यान रखिए, आपको पार्ट याद आ जाएगा। दैट इज आफ्टर पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट वन डिफाइंड द ब्रॉडर meaning and covered major areas about the India, and part two talked about the citizenship. It was very easy question. I don't think that anyone should have gone wrong for this one. Recently, a rare kind of yellow turtle was discovered in India. Whenever you talk about turtle, okay, Arunachal Pradesh, Uttarakhand are internal, okay, mainly it is ocean based, okay, and Orissa is quite famous because it keeps coming in news for olive ridley turtle, right? इनकी नेस्टिंग के लिए ये लोग आते हैं बीच पर उड़ीसा पे, ठीक है, और काफी ज्यादा गवर्नमेंट मेजर्स लेती है टू नॉट डिस्टर्ब देम। सो द येलो काइंड ऑफ टर्टल वाज फाउंड इन द स्टेट ऑफ Orissa recently, right? Asim, again, this is factual based. Here, there is nothing to go left, right, or guess or anything else. Either you know it, either you don't know it. Okay. Asim is Atmanirbhar skilled employee employer mapping that the government has started under the Atmanirbhar Bharat scheme. Fine. So that they can provide a gap, a bridge between the employers and the employees, job seekers and job providers, right? The government of India program regarding stay in India and study in India. Government of India has been taking a lot of uh, measures regarding education recently. Now with the new education policy coming in, which would be implemented by the next year. Okay, and also India is trying to provide more autonomy to the Indian university so that they can hire faculties from foreign universities, and they can foreign students can come and study in India. India is trying to be a world hub in education sector. In relation to that, Stay in India and Study in India scheme was initiated by common sense.
only Ministry of Education would be interested, right? It is an Indian education program. So this is one of the most easiest common sense question in the paper. Which one of the following lake in India has the largest quantity of substance found in the moon? ठीक है, आपको पता है मून को जाकर इतना हम लोग मून पे मिशन भेज रहे हैं, मार्स पे मिशन भेज रहे हैं, क्यों भेज रहे हैं? क्योंकि अर्थ जैसे जो प्लैनेट्स है जहाँ पे एटमॉस्फेयर है, तो यहाँ पे काफी चीजें चेंज हो गई हैं। ठीक है, यहाँ पर केमिकल रिएक्शन, रेस्ट ऑफ द थिंग्स, बाकी चीजें रहती हैं। मून विल बी सेम, राइट? तो बाहर जो आउटर स्पेस में मटेरियल घूम रहा है, एस्ट्रॉइड हो, मीटेरोइड हो या मून हो, उनका मटेरियल सेम है क्योंकि उनका ओरिजिन सेम है बाय द बिग बैंग थ्योरी कॉन्सेप्ट। ओके, तो एक मीटेरोइड टकरा कर इंडिया में लूनर लेक जो है, इसलिए उसको लूनार बोला जाता है, लूनर। ओके, इन महाराष्ट्र दैट वाज फॉर्म, जब टकराया और जिससे गड्ढा हुआ, बारिश हुई और वो भर गया और वो लेक बन गया। तो इसका आंसर यही है, चिल्का लेक इज इन ओडिशा, दैट इज अ पार्ट ऑफ, दैट हैज एन इनलेट विद द ओशन। लोकतक लेक मणिपुर में है। ठीक है, इट इज फेमस फॉर इट्स एनवायरमेंट एंड इकोलॉजिकल importance. Lunar lake is the one because due to the impact of a extra orbital object, right? So answer is A. The Pragyan rover installed in Chandrayaan 2 mission had how many wheels? Okay, definitely it did not have two, it did not have four. There might have been a confusion between four and six, but if you had read about it, okay, the Chandrayaan 2 mission, because it did not succeed in landing, many of the people might not have gone into the details, and UPSC surprised us by going that way, right? So it had a Vikram lander and Pragyan as a rover which had six wheels, okay, which was solar powered. If the linear momentum of a moving object gets doubled due to application of a force, then its kinetic energy will. Okay, linear momentum of a moving object get doubled due to application of force, then its kinetic energy will be. It is a simple formula based question. The kinetic energy is p square upon 2m. That is linear momentum, and the the question where it is given the linear momentum of a moving object gets doubled, that is p is becoming ke is equal to p square upon 2m. Okay, so p is equal to 2p, it is getting doubled. Okay, so in that case 4 p square upon 2m, p square upon 2m is what? Kinetic energy 1. If we talk it initial kinetic energy, so the new kinetic energy will be what? The new kinetic energy will be 4 times initial kinetic energy. So the answer would be increased by 4 times. That is, answer is B, right? Easy question was there. Okay, if the distance between two objects is increased by 2 times, the gravitational force between them will. Again, it is a formula based question. That is, force is equal to G m1 m2 upon radius square, right? If the distance between the two objects is increased by 2 times, increase अगर कर दिया तो 2r हो गया, that is equal to G m1 m2 upon 4r square. ठीक है, तो f क्या होगा? 1/4 ऑफ f1, अगर इसको इनिशियल मानकर चल रहे हैं, ठीक है, तो न्यू वाला क्या होगा? 1/4 डिक्रीज बाय 4 टाइम्स, आंसर वुड बी डी। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन इज नॉट करेक्ट? क्या होता है न्यूट्रॉन? न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन, और बाजू में क्या घूमते रहते हैं? इलेक्ट्रॉन। ओके, so neutron mass is almost equal as proton, yes, that is one of the similarity. Zero charge, yes, neutron has zero charge while proton has positive charge, it has zero and it has negative, so completely it become a neutral system. Neutrons are located inside the atomic nuclei, yes, bilkul. Neutrons revolve around the atomic nucleus. Obviously, if it's inside, these two are again contradictory statement. One of them can be true. Even a fifth standard student would have been able to solve this one. That okay, fine. As it's inside, so it cannot revolve outside. Okay. So the answer is D. Which one of the following statement with regard to the ultraviolet light is not correct? Ultraviolet light, it's a light form, so obviously it's an electromagnetic wave. Yes, it can travel through vacuum. You don't need any reason to believe otherwise. Space में travel करता है obviously. आपका ओजोन उसी से हमको protect करता है. It is a longitudinal wave. No, it is a electromagnetic wave. So again it became a contradiction. It has to be a transverse wave. ठीक है, its wavelength is shorter than the visible light. Visible light
उसके स्पेक्ट्रम में अल्ट्रावायलेट लाइट जो लाइट है वो उसके लेफ्ट में आता है. So definitely its wavelength is shorter. Yes, this is also true. This is also true. This, but this is false. Okay. So question is again not correct. So answer would be C. Right. Next question. If the speed of light in air is represented by c, which is generally what it is represented by, and the speed in the medium is u, then the refractive index of the medium can be calculated. Direct formula is there. Refractive index is what? C upon v. That is the speed of light uh, in air and that of in a particular medium. This is the basic formula of refractive index. That's what they have asked directly. So the answer is B. That is quite straightforward. Under the kingdom Plantae, which of the following individuals are predominantly aquatic? ठीक है, predominantly aquatic मतलब ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी द लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कि पानी में सिर्फ रहता है. ठीक है, तो ब्रायोफाइट्स, दिस आर एम्फिबियंस, दे कैन लिव इन बोथ वाटर एंड लैंड. ओके, एल्गे, यस इट कैन फॉर्म ओनली इन वाटर बॉडी. कोई डाउट है? कभी जमीन पे एल्गे देखा है? पानी चाहिए उसको. ठीक है, जहां आप देखते हो पत्थर वत्थर बाकी चीज में भी, उसमें भी मॉइस्चर की वजह से इट स्टार्ट प्रेसिपिटेटिंग. And this both gymnosperm and Pteridophyta are both land based. So the answer is very easy for this one. A. You don't even have to know about the rest three. Even if you're not aware about A, C, and D, you know about algae. Okay, so the algae is the um, answer. Now, next one. All of the individual of a particular organism, such as rose plant, belong to a taxonomic category called. Okay, this question is related to taxonomy. Okay, where there are different categories under which it has been divided. For example, species आता है, species के ऊपर genus आता है, genus के ऊपर family आती है. ठीक है, इस तरीके से ये hierarchy में it has been made. Okay. So they have given a particular organism such as rose plant. Okay, so they gave a generic term. When you give a generic term, then it is a genus. When you gave a specific term, then it is a species. So when you're talking about all the individual of a particular, उसके अंडर में कई सारी species आएंगे. Okay, the rose plant is a generic term, that is a genus. Okay, and there are hundreds of species of rose plants under that. Okay, so the answer is again, this is not that difficult. B. Pearls are harvested from. Okay, fine. Even if you have watched cartoons, okay, you have the concept of pearls. तो pearls क्या होता है? वो covered रहता है इस तरीके से, उसके अंदर pearl रहता है. ठीक है, dust particle इकट्ठा होते हैं और धीरे धीरे सीमेंट होते हुए pearl finally at that pressure in water bed it is formed. तो पहली चीज तो जो prawn है वो fish है. ठीक है, और इस टूना भी फिश है जो कि काफी फेमस होती है. ये दोनों खाए जाते हैं काफी ज्यादा. तो जिसको अगर आप रेस्टोरेंट्स भी जा रहे हो तो आपको पता है ये दोनों फिशेस हैं. ठीक है, दिस इज ऑल्सो वाटर बेस्ड ऑर्गेनिज्म. ओके, बट it does not have that kind of a structure where it can cap it, right? ऑयस्टर भी खाया जाता है और बहुत फेमस होता है, जिसका ऊपर का कवच हटाकर उसके अंदर ऑयस्टर होता है, उसको खाया जाता है. इट इज वेरी फेमस इन वेस्टर्न एंड वेस्टर्न कंट्रीज. So oyster is the only structure which can actually accumulate the particles to formation of pearl. So pearls are harvested in oyster, right? तो उसको आप pearl oyster कहते हैं, right? Wings of birds and bats are considered analogous structure because they have, analogous means similar. Okay, because both have common origin. No, bat is an mammal, it's the only flying mammal, and birds are different category in itself, so they could not have common origin. Common origin वाला cancel कर दो, दोनों कैंसिल हो गया, ए कैंसिल हो गया, डी कैंसिल हो गया, बी बचा और सी बचा. फंक्शन क्या है दोनों का फंक्शन क्या है? विंग्स का फ्लाई करना. तो फंक्शन क्या है? फंक्शन कॉमन है लेकिन ओरिजिन डिफरेंट है. तो ऑप्शन बी इज द option. So it's not that technical that we are going into that technicality. It's a very simple question that is asked in a way that you might feel that it's a bit complicated or technical kind of a question, right? Apart from hyperacid secretion, peptic ulcer are also developed due to bacterial infection. Infection. The causative agent is, ठीक है, hyperactive secretion, peptic ulcer. ठीक है, डेवलप ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन. ये पूछ रहा है किसके वजह से होता है? हेलिकोबैक्टर पाइलोरी. ठीक है,
E. coli, Streptococcus pneumonia and Salmonella typhimurium. ओके, देखो ई कोली आप जो अगर अगर आपके दिमाग में है तो ये इंटेस्टाइन में होता है, ये सबको पता है। यहाँ बात क्या कर रहा है पेप्टिक अल्सर की, पेप्टिक अल्सर कहाँ पर होता है, अल्सर कहाँ होता है, स्टमक में, तो ये गलत हो गया इस वजह से। इससे निमोनिया होता है, ये गलत हो गया। इससे थाइफाइड होता है, ये गलत हो गया। पाइलोरी इज अ पार्ट ऑफ लोअर स्टमक, ओके, सो दैट इज व्हाई ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। ओके, by theory of elimination also you could have gone कि these three are not in stomach, these two are not cause of ulcers and this one is in intestine, so only this option is left which should be the right option. Okay, next, a mixture of sodium chloride and ammonium chloride can be separated by, okay, sodium chloride is solid, right? it, while ammonium chloride is volatile. Okay, so sublimation is the process through which you are converting a solid directly into a gaseous state by providing heat. तो इनको सेपरेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों को जब साथ में आप गर्म करोगे तो ये तो गैसेस फॉर्म में सीधा चला जाएगा, ये नहीं जाएगा, इस गैस को आप कलेक्ट करके वापस से फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड और ये दोनों आपका अलग हो जाएगा। फिल्ट्रेशन अलग चीज हो गई, फिल्टर करना, दैट इज बेस्ड अपॉन द डेंसिटी एंड इफ पार्टिकल इज देयर देन यू कैन डू दैट। ओके, distillation will also not work over there. Sublimation is the very basic definition by which it is going to work, right? Symbol of element was introduced by, it's a factual based question, okay, either you know it or you don't know it. Okay, John Dalton is the one who introduced the symbol of element, right? Identify the correct pair of element among the following which are liquid at room temperature and standard pressure. ये पूछ रहा है कि इनमें से दोनों दो, ठीक है, चूज करो जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड रहते हैं। मर्क्यूरी तो हमने देखा है, ठीक है, इन स्कूल डेज ऑल्सो इन योर फिजिक्स लाइब्रेटरी ऑल्सो यू यूज्ड इट, तो मर्क्यूरी को आप सही ऑप्शन कर दो। ठीक है, तो आपके ए और सी हट जाते हैं। ठीक है, दूसरे में दूसरे में रिबिडियम है जो कि मेटल है जो कि सॉलिड है। ओके, रुबिडियम इज अ सॉलिड स्टेट metal while bromine, okay, is again a liquid. Okay, so the option is D, which we have gone through many a times in schooling days. Okay, which one of the following oxides show both acidic and basic behavior? Okay, metals, there is a basic distinction, okay, based upon metal and non-metal. Okay, the metal would be showing basic while the non-metal would be showing acidic behavior. Okay, among this, okay, being metals and non-metals, zinc oxide is the only one that would be showing both the properties of acidic and basic behavior. Okay, silver article turn black when kept in the open for longer time due to the formation of, okay, ये तो हटा दीजिए, इन तीन में सिल्वर है, उसमें सिल्वर का सिल्वर है ही नहीं, तो ये तो हट गया। सेकंड, इसको हटा दीजिए क्योंकि सिल्वर ऑक्सीडाइज नहीं होता है। ठीक है, गोल्ड सिल्वर ये they don't corrode, that is why they are precious metals. Okay, now AgS is there and Ag2S is there. Okay, based upon the valency, okay, we can come to the conclusion that the sulfur Ag silver has one while sulfur has two, so when they get in combination it will be Ag2S, which will be formed. This one will be unstable, only stability will be provided by D, so the answer would be D, right? Which of the following lenses will bend the light through largest angle? Lenses with power of plus 2.0 D, lenses with power of plus 2.5 D. Okay, diopter is the angle, is the unit of power for lenses. We know that. पॉजिटिव का मतलब क्या होता है कि वो कन्वर्ज, पॉजिटिव का मतलब होता है कि वो कन्वर्ज कर रहा है। ठीक है, और नेगेटिव का मतलब है कि इट्स डाइवर्जिंग, बस यही अंतर है पॉजिटिव और नेगेटिव में। ठीक है, तो बेंड करने की कैपेसिटी ज्यादा किसमें होगी, सिंपल आपको नंबर पे जाना है, नेगेटिव को हटा दीजिए, नेगेटिव तो सिर्फ डाइवर्जिंग एंड कन्वर्जिंग, कॉन्केव और कॉन्वेक्स की बात कर रहा है, तो सीधा इसका आंसर हो जाएगा बी। इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। ओके, a luminous object is placed at a distance of 40 centimeter from a converging lens of a focal length of 25 centimeter. We'll have to do this. Okay, uh, it is a lens based question. The image obtained in the screen is, okay,
कन्वर्जिंग लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस है, ठीक है, ये कन्वर्जिंग आपका लेंस हो गया. The lens will converge the light rays. Let's take this as the main thing. The focal length is given as f. Okay, okay. 2f would be this would be 25. This would be 50. The object is kept somewhere in between at 40 centimeter. Okay, it will go like this. Here also f and 2f. The other one will go. Okay, I did not create the gap equally. Let's do this again more. Okay, fine. So ये रखा है. We'll take f here. So 2f would be somewhere here. Okay. Similarly, f would be here and 2f would be here. Now the object is here, right? So how it's going to be? It will come here, then it will bend, and here it will go and meeting at this point. So what, which among the following would be correct? The image would be erect. No, it is going to be inverted. Now C and D option. Would it be smaller? No, it would be a magnified form of inverted image. Okay, so you could just have drawn it and it would have been a very easy question at that point of time. When a light ray enters a glass medium from a water at an angle of incidence of 0 degree, what would be the angle of refraction? If it is at 0 degree, it is being perpendicular to the surface. In that case, it would directly go down without any change because there is no angle of inclination at all. So the refraction will also be zero. Okay, again, it's an easy question. Which one of the following phenomena verifies the fact that the light travels much faster than sound? Okay, इनमें से क्या प्रूव करता है कि लाइट साउंड से ज्यादा तेज ट्रैवल करती है? ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इन द नाइट स्काई, इसमें कोई आवाज नहीं होती, सिर्फ लाइट होती है, तो कोई मतलब नहीं है. लाइटनिंग ऑफ मैचस्टिक, मैचस्टिक बहुत छोटी चीज है और आप जब भी जलाएंगे बहुत पास चलाओगे, तो इतना टाइम या इतना डिस्टेंस नहीं है कि आपको डिस्टिंक्शन पता चल पाएगा, बिल्कुल नहीं. मिराज का कोई लेना देना नहीं है अगेन साउंड से. थंडर स्टॉर्म, ठीक है, जब भी बिजली कड़कती है और लाइटनिंग होती है, देन यू हियर कि पहले रोशनी आती है और उसके कई सेकंड्स बाद, इनफैक्ट क्योंकि दूर है, डिस्टेंस काफी है, तो प्रॉपर टाइम और डिस्टेंस आपको मिल जाता है टू मेक अ डिस्टिंक्शन, और आवाज काफी देर बाद आती है. ये ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन, राइट. Which one of the following combination of source and screen would produce sharpest shadow of an opaque object? Okay, the object can be opaque or it can be transparent, right? now ये पूछ रहा है कि सोर्स है एक और एक स्क्रीन है, स्क्रीन के ऊपर इमेज पड़नी चाहिए, तो ऐसा क्या, कौन सा ऑप्शन है जिसमें ये इमेज है सबसे शार्पेस्ट क्रिएट होगी? ओके, पहली चीज तो अगर ये ट्रांसपेरेंट ग्लास होगा तो इमेज फॉर्म नहीं होगी क्योंकि इट विल गो अराउंड. इमेज फॉर्म, शैडो फॉर्म करने के लिए इट नीड्स टू रिफ्लेक्ट बैक. ओके, सो ट्रांसपेरेंट स्क्रीन वाले ऑप्शन गलत हो गए सीधा सीधा, तो ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी को तो आप हटा दो. ट्रांसपेरेंट स्क्रीन पे तो इमेज क्रिएट ही नहीं होगी, शैडो क्रिएट ही नहीं होगा, राइट. अब इसमें दो हैं, एक्सटेंडेड सोर्स या पॉइंट सोर्स. ओके, point source will form a sharper image. That is the difference between your if you have a bulb in your room, right? So that will form a sharper image. Extended source will form a elongated and a weaker image, right? So that is why A would be the right answer. Which one among the following is non-conventional source of energy? Many of you guys might have got confused in this one. ओके, इन विच वन? नॉन कन्वेंशनल सोर्स की बात करते हैं तो आप में से सभी ने पेट्रोलियम और कोल को तो हटा दिया होगा. रेडियो एक्टिव एलिमेंट और सोलर एनर्जी में देयर माइट बी कंफ्यूजन. व्हाई? बिकॉज मेनी ऑफ अस कंसीडर रिन्यूएबल एनर्जी एज नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी.
ठीक है. I specifically remember this because in my college days, okay, I specifically kept reading somewhere renewable energy, somewhere non-renewable, somewhere conventional, somewhere non-conventional. So I was like, ये चार चार अलग वर्ड क्यों दे रखे हैं? What is the difference? Okay, so I read about it, and that is how since then I remember that non-conventional means conventional मतलब अब तो word का मतलब ज़्यादा better पता है. कन्वेंशनल मतलब जो आपको हमेशा दिखता रहता है, जो नॉर्मली फॉलो किया जाता है, ठीक है. नॉन कन्वेंशनल मतलब जो थोड़ा हटके है, जो कि नॉर्मल नहीं है, ठीक है. तो कन्वेंशनल मतलब वो कोई भी सोर्स ऑफ एनर्जी जो कि रिन्यूएबल हो या नॉन रिन्यूएबल हो, लेकिन अच्छे लार्ज स्केल में यूज करा जा रहा है अभी तक, ठीक है. तो पेट्रोल और कोल तो है, थर्मल पावर प्लांट और पेट्रोलियम के बेस्ड एनर्जी तो होता ही है. रेडियो एक्टिव में आपका न्यूक्लियर एनर्जी आ गया, जो कि हमेशा से आपके पास है. सोलर एनर्जी इज अ न्यू फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज बिंग researched about, okay, and being exploited. So it is the non-conventional source of energy. So the option would be D. Okay, which one of the following statement about phloem is correct? Okay, जो आप प्लांट सेल्स की बात करते हैं, तो क्या करता है ये? वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस के बाद, ठीक है. जो आपका लीव्स, जो क्लोरोफिल जब फोटोसिंथेसिस में प्रोसेस करता है और हेल्प करता है, उसके बाद जो उसका आउटपुट होता है उसको ट्रैवल कराने का मतलब खाना लेकर जाने का काम इसका होता है. तो लेट्स सी, transport water and minerals, okay. It doesn't travel, it does take minerals in a way that it can be used as a food for the plant, but it doesn't do that for water. It transport photosynthetic product. तो photosynthetic product means what? कि फोटोसिंथेसिस के बाद जो होगा दैट इज आपका जो शुगर फॉर्म होगा, सुक्रोज फॉर्म होगा, ठीक है, एनर्जी जो होगी उसको करना. यस, दैट इज इट्स बेसिक जॉब, एंड इट्स अ सिंपल टिश्यू गिव सपोर्ट टू द plant. In indirectly it does, but the direct function would be that to transport the sugar, okay, from the source to the rest of the parts of the plant, which is also the photogenetic product. So directly sugar बोलने की जगह they have just put in a photogenetic product. Okay, mature sclerenchyma cells these are have cellulose wall and are living. No, the word itself means that they are dead. Okay, it means that it is dead. So this and this option would not be correct. This and this could be correct. But out of both, okay, this is something that is very rare and very weak. Okay, and this is the only proper structure that is formed. So C. Oh, no, sorry, I said inverted way. Okay, submersized walls would be very weak and are not stable at all. Okay, so they are very rare and they do not have a lasting validity. While lignified walls are something more concrete and are lasting of the cells, and that is why D would be the correct answer, which is for mature. Now, in human beings, the chromosomes that determine birth of a normal female child. Okay, normal female child का क्या रहता है आपका? X और X रहता है, right? ठीक है, और मदर एंड फादर की तरफ से, ठीक है. मदर के फिर से एक्स एक्स हो गया, फादर का मतलब एक्स वाई हो गया. तो एक्स एक्स मतलब डॉटर, नॉर्मल फीमेल चाइल्ड के लिए क्या होगा? ये दोनों एक्स में से कोई सा भी एक्स दे दे और ये एक्स वाई में से इनको एक्स ही देना होगा, ठीक है. वन एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम मदर, वन एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम फादर, यस, दैट इज द करेक्ट वन. एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम मदर एंड वन वाई क्रोमोसोम फ्रॉम फादर, तब तो मेल पे हो गया वो. टू एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम मदर एंड वन एक्स, नो, ओनली वन एंड वन विल फॉर्म zygote, and one X chromosome and one Y chromosome from father and one X chromosome. No, again, you have the only two are required. You are again increasing it to three. Okay, so it is easy. Its answer is one. Antibiotics such as penicillin blocks. Okay, जो एंटीबायोटिक होता है, what that generally does, because in the COVID times, okay, you have studied the structure of that virus and all. Okay. So if you have seen about the vaccination that they are working on, what it is trying to do is it is trying to make sure that the wall of the COVID either collapses or does not is not able to attach to the healthy cell tissue and is not able to infect it. Okay. So when antibiotics such as penicillin, what they do, they will prevent the wall formation in a bacteria, and by that it will not be able to spread itself. Okay, RNA और इसका तो बैक्टीरिया में नहीं होता है,
and division का भी नहीं है. It is the mainly the cell wall formation that the vaccine attacks. The radioactive isotope of hydrogen is, okay, protium, deuterium, tritium, and hydronium. Okay, protium, deuterium, tritium, all three are the isotope of hydrogen, but among them only tritium is the one which is radioactive. So the answer would be C, tritium, right? Which one of the following is used for storing biological tissues? In biolabs in school days, we used to have those burners in which there were biological tissues which were preserved, but they were not among any four of them. Okay, among them, this is inert, and this is also inert gas. Okay, only nitrogen is the odd one out, and which can be used for preserving or storing a biological uh, tissue, right? Formaldehyde or something was being used in general, but here the liquid nitrogen is being used. Which one of the following does not form oxide on reaction with oxygen? Okay, as I said before, also when the question about the silver having turning black was asked, I said um, it doesn't react with oxygen along with gold. Okay, so only silver is the one. We don't even have to go through other options which would not form an oxide. The valency of phosphorus is, okay. The valency of phosphorus is generally 3, but it can also be 5. Okay, so what is valency is the combining capacity of an element, and it might vary in phosphorus that it might be 3 and it might also be 5. Okay, so here the D option is correct. Lead nitrate on heating gives, okay, so lead nitrate when heated gives PbO, okay, NO2 and O2. Okay, so only option B is correct. Okay, NO2 not NO and not PbO2 PbO. Okay, which one of the following is decommissioned aircraft carrier? With a very normal knowledge about the military, you would have been able to know it because Virat and Vikrant were the two aircraft carriers that Indian Navy was using, and both of them have been decommissioned now. Now the present aircraft carrier is INS Vikramaditya. Okay, and another indigenously being aircraft carrier is under production right now. So INS Vikrant, it's a very easy question. Who among the following has won the single titles in Wimbledon? The question from current affair, that is Wimbledon Tennis Championship in year 2019. Okay. Um, the winner is Simona Halep. She is from Romania. Okay. So she won the single title in Wimbledon Tennis Championship. Recently, islands of Andaman and Nicobar were connected with the mainland by submarine optical fiber. Which one of the following island was not connected initially? It is a tricky question because um, you would have known that okay, Andaman and Nicobar finally got connected with the mainland India through optical fibers. Um, but which island was not included? That is something that only if you had a detailed reading about the project you would have known. Obviously, Little Andaman and Port Blair are important enough to be connected. Swaraj Island and Shahid Island are the two islands that there might have been a bit confusion about. But the right answer for this question is Shahid Island. Okay. In August 2020, who among the following was administered the oath as the Prime Minister of Sri Lanka for the fourth time? Okay, it was quite in news because India was very pessimistic. India was very nervous about how, because last time he was in power, he was very anti-India and very pro-China. But recently, he made a declaration that the Sri Lankan for policy would be India first policy. Okay, both brothers are in political power now. One is president, one is the prime minister. Mahinda Rajapakse became the prime minister of Sri Lanka for the fourth time. Which one of the following Indian Ocean island nation has recently declared a state of environmental emergency due to oil spill from a ground ship? Okay, दो जगह हैं जहां पे ऑयल स्पिल का प्रॉब्लम हुआ है. One is Sri Lanka, okay, and one is Mauritius. Okay, Mauritius is a very environmentally sensitive country because of global warming and all. Okay, the sea level rising and all, it has started declaring climate emergency in case it's getting impacted. Okay, so Mauritius was the country where a
a grounded ship oil spill had created an environmental emergency, and that ship was from Japan. Okay, and Japan is taking responsibility for cleaning up the sea and the environmental damage that it might have caused. Right? This has already been discussed. Okay, so we have discussed all the questions that have appeared for the CDS this year. Okay, and two intentions that we had today was first to have you to let you have an accurate answer key where you would be able to um, compare your answers with and come to a conclusion about to judge how well you have done your examination. Second, to just tell you that from point of view of being in the examination, how you can handle and how with what kind of an attitude you are supposed to approach the paper and deal with them, right? So I hope the session today helped you. Okay, if you have any problems or any queries, you could ask us, right? It has been a long session and I wish you well for your results. Jai Hind everyone. Good night. इस तरफ है होना जरा ये एरो ही इसके ऊपर नहीं आ रहा है स्ट्रीमिंग स्टॉप के ऊपर